Recording progress. May we request Bhanteji to start with some blessings and chantings. Okay, so हम पहले तो जो हमारा जो बुद्ध धम्म संघ के गुण हैं पहले हम वो करेंगे, और फिर दो सुत्त जो हैं हमारे, जो गृहस्थों के लिए शीलों का डिटेल देती हैं, खास करके जो 8 शील हैं उस पे एडवाइस हैं। तो उसके बाद हम वो दो सुत्त करेंगे, धम्मिक और महावच्च। तो हम लोग सब पहले 3 बार प्रणाम करके फिर इतिपिसो स्टार्ट करेंगे। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विज्जाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पच्छत्तं वेदितव्यो विन्युहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष योगानि 8 पुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणियो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्याति। Darsab, would you like to display Dhammik Stoop? Sorry, Sutta, not Stoop. Sorry. So, इस सुत्त में जो शील हैं उनकी काफी एडिशनल डिटेल दी गई है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, मेरे लिए भी काफी ये एनलाइटनिंग था। इसको आपको याद होगा, कुछ हफ्तों पहले सुरेंद्र प्रसाद जी
ने चांट किया था हमारे लिए। सो देयर इज डिटेल ऑफ जो साधारण शील है वो तो हम उनसे परिचित हैं। अब इसमें उसकी एक एक तरीके से देखें तो उसको और रिफाइन कैसे हमें करना चाहिए, कर सकते हैं, उसकी डिटेल है। सो धम्मेक सुत्त मैं केवल हिंदी में करूंगा, और फिर जो महावच्च है वो हम दोनों पाली और हिंदी दोनों में करेंगे। धम्मेक सुत्त का ये अंश है, एक एक्सट्रैक्ट है ये। अब मैं गृहस्थों के कर्तव्य बताता हूँ, जिसका पालन करने से वह अच्छा श्रावक होता है। क्योंकि एक संपत्ति धारक के लिए भिक्षुओं के संपूर्ण नियमों का पालन संभव नहीं है। प्राणियों की हत्या न करें, न ही करवाएं, न दूसरों द्वारा करने पर उनका अनुमोदन करें। सभी प्राणियों के प्रति हिंसा त्याग दें। इस लोक में जो भी हैं, चाहे छोटे या बड़े, जो वस्तु उसे न दी गई हो, समझदार श्रावक उसे न ले, न चोरी करवाए, न चोरी का अनुमोदन करे, हर प्रकार की चोरी से दूर रहे। समझदार व्यक्ति ब्रह्मचर्य न तोड़े, उसे अंगारों पर चलने सदृश मानता है। यदि ब्रह्मचर्य रखना संभव न हो तो दूसरों की पत्नी का अतिक्रमण न करें। अदालत में या परिषद में या एक दूसरे से झूठ न बोलें, न बुलवाएं, न झूठ बोलने का अनुमोदन करें, हर प्रकार के झूठ से विरत रहें। जो गृहस्थ इस शिक्षा को पसंद करते हैं वे मद्यपान न करें, अन्य को पीने को न कहें, न पीने का अनुमोदन करें। इसको पागलपन जैसा समझकर मूर्ख लोग नशे में पाप कर्म करते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रमत्त करते हैं। इस पाप के क्षेत्र को त्याग दें जो मूर्खों और मोहित पागल कर देता है। प्राणियों की हत्या न करें, न चोरी करें, न झूठ बोलें, न मद्यपान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मैथुन से दूर रहें, रात्रि में विकाल भोजन न करें, माला सुगंध न धारण करें, धरती को बिस्तर बनाएं अथवा चटाई पर सोएं। इसे अष्टांगिक उपोसत कहते हैं, जिसे दुख का अंत करने वाले भगवान बुद्ध ने प्रकाशित किया है। इस प्रकार अष्टांगिक उपोसत को चंद्र पक्ष की चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी के दिन एवं विशेष छुट्टी के दिनों पर प्रसन्न मन से संपूर्ण 8 अंगों में रखना चाहिए। फिर उपोसत करने के उपरांत समझदार व्यक्ति भिक्षु संघ को अन्न एवं द्रव्य प्रसन्न और मुदित मन से यथोचित तरह से बांटे। माता पिता का धर्मानुकूल भरण पोषण करे, व्यवहार भी धर्मानुकूल तरीके से करे। जो गृहस्थ अप्रमत्त हो इन कर्तव्यों को करता है, स्वयं प्रभा नामक देवलोक में उसका पुनर्जन्म होता है।
अब हम महावच सुत्त का एक अंश करेंगे जो इन्हीं बिंदुओं पर कुछ और प्रकाश डालता है। मैं इसका पहले पूरा पाली वर्जन करूंगा, फिर इसका हिंदी करेंगे। लोभो खो वच्च अकुशलं अलोभो कुशलं दोषो खो वच्च अकुशलं अदोषो कुशलं मोहो खो वच्च अकुशलं अमोहो कुशलं इति खो वच्च इमे तयो धम्मा अकुशला तयो धम्मा कुशला पाणातिपातो खो वच्च अकुशलं पाणातिपाता वेरमणि कुशलं अदिन्नादाना खो वच्च अकुशलं अदिन्नादाना वेरमणि कुशलं कामेषु मिच्छाचारा खो वच्च अकुशलं कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कुशलं मूसावादो खो वच्च अकुशलं मूसावादा वेरमणि कुशलं पिशुणाय वाचा खो वच्च अकुशलं पिशुणाय वाचाय वेरमणि कुशलं भरुसा वाचा खो वच्च अकुशलं भरुसाय वाचाय वेरमणि कुशलं संभपलापो खो वच्च अकुशलं संभपलापा वेरमणि कुशलं अभिज्ञा खो वच्च अकुशलं अनभिज्ञा कुशलं व्यापादो खो वच्च अकुशलं अव्यापादो कुशलं मिच्छादिट्ठी खो वच्च अकुशलं सम्मादिट्ठी कुशलं इति खो वच्च इमे दस्स धम्मा अकुशला दस्स धम्मा कुशला। लोभ अकुशल है अलोभ कुशल, द्वेष अकुशल है अद्वेष कुशल, मोह अकुशल है अमोह कुशल। यह है 3 अकुशल धम्म और 3 कुशल धम्म। प्राणी हत्या अकुशल है, प्राणी हत्या न करना कुशल है। चोरी करना अकुशल है, चोरी न करना कुशल है। व्यभिचार अकुशल है, व्यभिचार न करना कुशल है। झूठ बोलना अकुशल है, झूठ न बोलना कुशल है। चुगली करना अकुशल है, चुगली न करना कुशल है। कठोर वचन अकुशल है, कठोर वचन न बोलना कुशल है। निरर्थक बातें करना अकुशल है, निरर्थक बातें न करना कुशल है। लोलुपता अकुशल है, लोलुपता न होना कुशल है। दुर्भावना अकुशल है, दुर्भावना न होना कुशल है। मिथ्या दृष्टि अकुशल है, सम्यक दृष्टि कुशल है। ये हैं 10 अकुशल धम्म और 10 कुशल धम्म। With your permission, Bhanteji, I'll point out one interesting thing. Please, please, Darshan. सब लोग, me included, have been used to saying Musavada Veramani. Actually, the word is Musavada Veramani. It is small Musavada. Not So, Darshan, इस तरह difference दोनों में फर्क है। हाँ, एक में MU है, एक में MU with a bar है.
हिंदी में मुसावादा, मूसावादा, so there's a different word altogether. So झूठ बोलने को मुसावादा है. हम लोग because of habit we have been speaking in that manner. तो मूसा का क्या मतलब है? Musa is not a word there, I think. अच्छा, है ही नहीं, मतलब शब्द ही नहीं है. I will have to check. How did it happen that we are calling it Musawada? We have been used to in the kind of जो हमारी चैंटिंग में है, हम लोग शायद विपश्यना टाइम से आदत पड़ी हुई है मूसा आता क्या नहीं. देखता हूँ मैं मूसा का भी कोई मतलब है क्या. मूसी का तो म्यूजिक का तो मतलब है म्यूजिक जो होता है संगीत, बट मूसा का मैंने पता नहीं. Music is संगीत. Something of that kind, I think. Let me check. But anyway, हमारा जो मेन इशू होता है कि we should all remember to say it is Musavada Veramani. So while Dharsab looks for it, we can again once more hold the bhav, katanyata का भाव कि हमें ऐसे टीचर्स और टीचिंग्स का एक्सेस है जो कि हमें ना केवल स्पिरिट लेकिन लेटर में भी मदद होती है, लेटर को सही रखने में. सो इट्स अ रेयर गिफ्ट बिकॉज आई एम अवेयर कि जो मोनास्टिक सर्कल्स हैं उनमें भी हम इस तरह के काफ़ी गलतियां करते हैं. इनफैक्ट ये प्रोनाउंसिएशन बहुत सामान्य रूप से सभी जगह की जाती है. So with that gratitude, we can see if there is a different word meaning before we get into the actual sutta. Yeah, मूसा का मतलब है लोहा पिघलाना, so it's a totally different word. It's a totally different word. Okay, so Dharsab, if I may request, संगीति सूत्र का अगर आप डिस्प्ले करें. What I was thinking was कि हम शायद जो उसका शुरुआत का पार्ट है, इंट्रोडक्शन जो है, वो मैं दोबारा से पढ़ूंगा, just so that हम में से कई लोग जो पहले एक महीने पहले नहीं थे, अगर वो जुड़े हों तो उनको कम से कम भूमिका हो, और फिर हम उसका जो मेन सेक्शन है वो शुरू करेंगे. एक आध कुछ मैं अनाउंसमेंट्स पहले कर दूं. जैसा कि आप लोगों को ख्याल होगा, पिछली बार जब हम मिले थे उपोसथ के दिन, तो ये एक डायलॉग, एक ऑनगोइंग एक चर्चा है. सो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को कोई सवाल हो तो अंत तक वेट करें, और नॉट ओनली सवाल, बट अगर आप में से किसी को कोई भी जो बिंदु हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ कहना है, इफ़ यू हैव इनसाइट, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, देन प्लीज़ गो अहेड. इसी तरीके से हम सब यहाँ एक दूसरे से सीखने के भाव से इकट्ठा हुए हैं. और जैसा कि मैं आज किसी के साथ शेयर कर रहा था शाम को, ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है. अगर हम सुत्तों को माने और समझें तो उस समय पर भी 2500 साल पहले भी ये एनकरेज किया जाता था कि जो फुल मून, जीरो मून और अष्टमी होती है, उस दिन कम से कम भिक्षु एकत्रित हों, जिसको अब हम सत्संग कहते हैं, वेरी मच दैट. और जो मेरी समझ है वो ये है कि उस शाम को काफ़ी लेट तक इसी तरह से धर्म चर्चा होती थी. और हमारी जो मोनेस्ट्रीज हैं, जो अजान चा का खास फोकस था, एनकरेजमेंट थी. इसी तरीके से हर हफ्ते एक बार सब भिक्षु जो हैं कम से कम वो पूरी रात जगते हैं. और अलग अलग मोनेस्ट्रीज के अलग अलग सिस्टम्स हैं. कहीं धर्म चर्चा होती है, कहीं चैंटिंग होती है, कहीं क्वाइट साइलेंट टाइम साथ होता है. और ना केवल भिक्षु लेकिन साथ में जो गृहस्थ हैं वो भी, कई गृहस्थ मोनेस्ट्रीज में आते हैं. तो उसी भाव के साथ हम लोग सब जुड़े हैं. आज यहाँ धम्मराम में
निलय है हमारे साथ, शांत इज हियर और सुरेन जी हैं साथ में. सो इन सम सेंसेस इट्स वेरी फॉर मी वेरी इंस्पायरिंग कि वो ट्रेडिशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और थाईलैंड में और हमारे और अजानचा के मोनेस्ट्रीज में जिस तरीके से होता है वो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं. सो प्लीज गो अहेड एंड say what you would like in relation to जो भी हम चर्चा करेंगे. If you give him the mic, then सुरेन जी के पास एक कमेंट है मूसावादा वाली बात पर. हेलो जी. हाँ, ये एक्चुअली जो मूसावादा के बारे में अभी आपने बोला, तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया और अभी मैंने ये किताब ये मतलब वंदना पुस्तिका खोली भी है, तो इसमें बड़ी ऊ की ही मात्रा माँ पे लगी हुई है. तो अगर वो छोटी ई की मात्रा होगी तो हम छोटी ही प्रोनाउंस करेंगे. हमारी किताब में मेरे पास जो अभी है, अभी मैंने खोली जो अपनी, हाँ, वंदना वाली. वंदना पुस्तिका जी, ये है पेज नंबर 226 है मेरे पास जो है, शायद 9th एडिशन है ये. और 236. फरवरी वाला है. ओहो, ये ये त्रिशरण एवं पंचशील लेने की याचना. अच्छा, यहाँ देखिए, इसमें जो मैंने मुसा किया हुआ है ना, ये देखिए, ये जो अभी मंत्र जी पढ़ रहे थे महावच्छ में, हाँ जी, इसमें मुसावादा लिखा हुआ है. हाँ, यहाँ पर तो मुंह है, ठीक है, लेकिन ये जो है मैं अक्सर पढ़ता हूँ इसको, तो मैंने आज तक कभी छोटी मुंह देखी नहीं है इस पे, तो दैट इज व्हाई आई पॉइंटेड इट आउट दैट मस्ट एक्चुअली. बी माय मिस्टेक देन. मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, नई नए एडिशन में साथ ही साथ करेक्ट भी कर दूंगा अगर है तो. जी, थैंक यू, थैंक यू. एंड में जहाँ शरण लेते हैं वहां पे है. हाँ जी, ये हाँ, लास्ट में करेक्ट, पांचशील. जी हाँ, बड़ी ऊ की हाँ मात्रा है, जी जी, बड़ी ऊ की यही. मात्रा है. ये पेज नंबर 142 है हिंदी पुस्तक हाँ, इसी का. में नीचे, इसी में नीचे हम्म, 4 नंबर पे. जी हाँ, 4 नंबर पे. हाँ, ठीक कह रहे हो. ये हाँ, ये दिस ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग. इसको ठीक कर दूंगा. थैंक यू सर. आदत पड़ी है ना हम सबको. दीपक सूरी जी, आप कुछ कह रहे हैं या इज दैट एन एक्सीडेंट? जी जी जी, नहीं, एक्सीडेंट नहीं है. पार्डन मी फॉर माय इग्नोरेंस. आपने अभी कहा कि अमावस्या, पूर्णमासी और अष्टमी के दिनों में हमारे ट्रेडिशन में ये खास महत्व है कि हम जो है मॉन्क्स इकट्ठे होते हैं और रात को देर तक जागते हैं. तो ये 3 दिनों का क्या महत्व क्या है? कोई वाइब्रेशन स्पेशल होती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन होती हैं एटमॉस्फेयर में, या क्या? Pardon me for my ignorance. I'm not aware. वाइब्रेशंस का तो आप में से कोई बताएंगे. जो मेरी समझ है वो ये है कि ये जो मून डेज हैं इनका ऑलरेडी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति, उसमें बहुत महत्व रहा है. जी 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 जी, हाँ है, but I'm not aware, इसलिए मैंने इसलिए कहा. Right. Yeah, so I'm not familiar with any particular vibratory significance or otherwise, but ये परंपरा रही है. And as I understand कि भगवान बुद्ध ने कई सारी existing practices को ही adapt कर लिया. So in that sense, मेरा समझ ये है कि इन दिनों को बहुत auspicious माना जाता था. And maybe धर साहब और राजेंद्र जी और maybe even सुरेन जी, whoever is more familiar कि इसको हम लोग ट्रेडिशनली ऑस्पिशियस क्यों मानते हैं, वो लोग इस पे प्रकाश डाल सकते हैं. बट मेरी समझ ये है कि क्योंकि ऑलरेडी ये प्रथा रही थी उस जमाने में भी, सो दिस वाज सिंपली अडेप्टेड एंड कंटिन्यूड. और एज आई अंडरस्टैंड कई संप्रदायों के जो एसेटिक्स थे, सेंट्स थे, वो इसी तरह के से एकत्रित हुआ करते. सो इट्स सिंपली एन अडेप्टेशन. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? आई वुड रिक्वेस्ट somebody who knows about it to maybe speak. That's precisely the question.
Basically इधर साहब we can tell it more, but मेरा experience जो है वो मैं share करना चाहता हूँ, because as a Kashmiri I know all the 3 days have been of a very great importance in our religious practices. So I remember as a child my mother would prepare meethi puri on every Purnamasi, and I had to distribute to all the Kashmiris in our Kidwai Nagar. So this is perhaps what I now realize is this could be because we had a lot of Buddhist influence in Kashmir at some given time. तो मे बी वहां से ये आया है, क्योंकि मैंने बाकी जगह इसको हिंदू में इतना प्रचलित नहीं देखा है जितना कि कश्मीर में मैंने देखा कि अमावस पे व्रत रखना, पूर्णमासी के दिन व्रत रखना और अष्टमी के दिन व्रत रखना, ये तीनों व्रत बहुत जरूरी होते थे. तो इसकी फर्दर क्या सिग्निफिकेंस है, आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड सो मच, बट यस दिस यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली, आई मीन आवर लाइफ पैटर्न. Yeah, that's true. But moon has a very strong influence on human body. Extremely strong influence. You know? आपने सुना होगा कि जब full moon होता है तो there is high tide in the sea. Yeah. Similarly, our human body is, I think, 80% water or 90% water. So it's obvious that it will have strong influence on that. Then the whole process of recreation, the procreation is associated with lunar cycles. You know, the woman menstruation is associated with lunar cycles. So it has a very strong influence in the tantric tradition and in other traditions. Yogic tradition, people who are very sensitive can feel the impact of moon on the body. And it's very well known that people who have mental difficulties, they get exasperated on the Purnima day. This is an empirical observation. So it has very strong influence on mind, but there are not very many people who can really feel that influence. So it's a matter of sensitivity and ability to meditate to such an extent. So the Purnima and Amavasya have a very strong influence, and middle days have been chosen because it's easy to count and see that, yes, after 7 days you have another half day. And they are also visible. No? That's the point, interesting point. That Purnima is visible, Amavasya is visible, and therefore when there is no other means of counting days, these become very convenient ways of knowing when to meet again. So that also is a reason which can be easily understood. Okay, thank you. Thank you. यहाँ पे अभी 3 दिन की बात हो रही है एक्चुअली. तो वह एक्चुअली 4 दिन है. अष्टमी 2 बार आती है. एक बार तो इट बिकम्स 4 days एक्चुअली. सो आई थिंक रॉन्ग में कम्युनिकेशन ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला. आई थिंक दिस इज व्हाट आई थिंक. Yeah, that's what Bhante ji said, na? Every 7 days, every week. In all cultures, there is a culture of keeping 1 day a week as Sabbath or a day for spiritual practices. In Christianity, that is everywhere it is that. कि एक दिन किसी में कहीं फ्राइडे रखा गया, कहीं संडे रखा गया, कहीं ट्यूसडे रखा गया, कहीं सैटरडे रखा गया. So different people, different traditions have kept 1 day in a week as special day, depending on the deity they choose to have devotion towards. This is strictly on a lighter note, completely as a joke. और राजेंद्र जी का मुझे काफी अच्छा लगा. The focus was quite clearly on पोषण, vibrations वगैरह तो देख लेंगे, कोई बात नहीं. Okay, so well, it's late at night, so I'm going to have to take some recourse to some jokes to keep things going. Okay, there is a comment. लंबा comment है. It's same thing which I have said already. So. Okay, very good. So संगीति सुत्त का थोड़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं. It's very interesting. जैसा पिछली बार I think धर साहब had shared with us.
कि इसकी भूमिका काफी अहम है हम सबके लिए as followers of the Buddha. So let's listen to the introduction. So I have heard, at one time the Buddha was wandering in the land of the Mallas together with a large sangha of 500 mendicants when he arrived at a Malyan town named Pava. There he stayed in Chunda, the smith's mango grove. Now at that time, a new town hall named Ubbhattaka had recently been constructed for the Mallas of Pava. It had not yet been occupied by an ascetic or Brahmin or any person at all. The Mallas of Pava also heard that the Buddha had arrived along with a large sangha of bhikkhus and was staying in Chunda's mango grove. Then the Mallas of Pava went up to the Buddha, bowed, sat down to one side and said to him, "Sir, a new town hall named Ubbhattaka has recently been constructed for the Mallas of Pava. It has not yet been occupied by an ascetic or Brahmin or any person at all. May the Buddha be the first to use it, and only then will the Mallas of Pava use it. That would be for the lasting welfare and happiness of the Mallas of Pava." The Buddha consented in silence. Then, knowing that the Buddha had consented, the Mallas got up from their seat, bowed, and respectfully circled the Buddha, keeping him on their right. Then they went to the new town hall, where they spread carpets all over, prepared set up a water jar, and placed a lamp. Then they went back to the Buddha, bowed, stood to one side, and told him that all preparations had been completed. Seat for the Lord has been prepared, water jar has been set up, and an oil lamp has been placed. Please, sir, come at your convenience. Then the Buddha robed up, and taking his bowl and robe, went to the new town hall together with the sangha of mendicants. Having washed his feet, he entered the town hall and sat against the central column facing east. The sangha of mendicants also washed their feet, entered the town hall, and sat against the west wall facing east, with the Buddha right in front of them. The Mallas of Pava also washed their feet, entered the town hall, and sat against the east wall facing the west, with the Buddha right in front of them. The Buddha spent most of the night educating, encouraging, firing up, and inspiring the Mallas with the Dhamma talk. Then he dismissed them. "The night is getting late, Vasetas. Please go at your convenience." "Yes, sir," replied the Mallas. They got up from their seat, bowed, and respectfully circled the Buddha, keeping him on their right before leaving. Soon after they left, the Buddha looked around the sangha of mendicants who were so very silent. He addressed Venerable Sariputta. "Sariputta, the sangha of mendicants is rid of dullness and drowsiness. Give them some Dhamma talk as you feel inspired. My back is sore. I'll stretch it." "Yes, sir," Sariputta replied. And then the Buddha spread out his outer robe, folded in four, and laid down in the lion's posture on the right side, placing one foot on top of the other, mindful and aware, and focused on the time of getting up. Now, at that time, the Nigant Nathaput had recently passed away at Pava. With his passing, the Jain ascetics split, dividing into two factions, arguing, quarreling, and disputing, continually wounding each other with barbed words. "You don't understand this teaching and training. I understand this teaching and training." What? You understand this teaching and training? You're practicing wrong. I am practicing right. I stay on topic. You don't. You said last night what you should have said first. You said first what you should have said last. What you have thought so much about has been disproved. Your doctrine is refuted. Go on, save your doctrine. You're trapped. Get yourself out of this if you can. You'd think there was nothing but slaughter going on among the Jain ascetics. And the Nigant Nathaputta's white-clothed lay disciples were disillusioned, dismayed, and disappointed in the Jain ascetics. They were equally disappointed with the teaching and training so poorly explained and poorly propounded
not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone who is not a fully awakened Buddha, with broken monument and without a refuge. Then Sariputta told the mendicants about these things. He went on to say, that's what happens, reverends, when a teaching and training is poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone who is not a fully awakened Buddha. But this teaching is well explained and well propounded to us by the Blessed One, emancipating, leading to peace, proclaimed by someone who is a fully awakened Buddha. You should all recite this in concert without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, out of compassion for the world, for the benefit, welfare, and happiness of devas and humans. And what is this Dhamma that has been well proclaimed by the Lord? So, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, धर साहब ने जो ये शेड किया है, that's the operative part, कि we should all recite ये जो teaching is Sangiti Sutta में, and generally the Buddha's teaching, without disputing, so that the spiritual path may last for a long time. So as we can see, we are all encouraged to recite the teachings, to read, study, to remember it. So in conjunction with the instructions that we've received from our teachers, as you can see in the Sutta, हम इस Sutta का जो study है उसको आगे बढ़ाएंगे. हमने अब इस Sutta में basically सारे पुत्र जो हैं वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग सूत्रों से और टीचिंग्स जो उन्होंने सुनी हैं उन सबको सेट्स में बांट रहे हैं, 1s, 2s, 3s, 4s and so on and so forth. तो पिछले बार हमने 1s and 2s की जो टीचिंग्स थी उसको तो कवर कर लिया था, आज हम 3s से शुरू करेंगे. Darsab, I'd request and invite you to please step in when you consider something needs to be amended or added, because the display for me is not right in front of me, so I might miss your turning on your mic, etc. जी. Okay, so once more, encouraging all of you to step in if you have anything to add or ask. Antaji, can I step in for a minute, if you permit? Please. This is a very, I don't know whether I should be really talking about this, but in this Sutta collection, there are a couple of places where the suttas are particularly critical of Jain traditions, which is slightly counterintuitive, because usually in religious texts, one limits oneself, one limits to the main teachings of that tradition. And it's a little unusual, and I was wondering whether there is some reason for it or something that we can say about it. Just, if you think it is not an appropriate topic for discussion, it's fine with me. Well, I had myself, and this is not the only case, कुछ एक आध जगहों पर और जिस तरीके से ये कमेंट्री और ट्रेडिशंस पे की जाती है या जो भाषा है वो अटपटी जरूर लगती है. So I'll invite Dharsa, but just before that जो मेरी समझ है वो ये है, कुछ कमेंटेटर्स जरूर हैं, कुछ एकेडमिक्स हैं जो ये कहते हैं कि some of the more sharp language is actually possibly a later addition. That's one. The reason I feel कि जो भाव है वो और सुत्तों में captured है, और एक मुझे specific याद आता है सुत्त, I don't remember the exact name, उसका content ये है कि there is a lay follower जो कि
और ascetics को अब तक support कर रहे हैं, and then he meets the Buddha and the Buddha teaches him, and of course he begins to support the Buddha and his followers. And the Buddha provides an injunction, okay, that's okay, but you must continue your support of other ascetics. So it appears to me कि overall हम teaching अगर देखें, उसका जो भाव है, उसका जो attitude है, उसका जो रुख है, it seems to me to be more sort of not really very barbed wiry at others. That's how I see it. And so therefore, personally for me, जब कुछ ऐसी चीजें appear करती हैं that don't sit well overall, then you know, I'm able to myself take it a little lightly. That's been my attitude. So I think the thrust, the issue, I mean, language aside, I think the thrust is कि अगर teachings को हम लोग ठीक तरीके से preserve नहीं करते हैं, हम उसको frequently recite नहीं करते हैं, अगर हम मिलते नहीं हैं आपस में, और जगहों पर किस तरीके से मिलना चाहिए उन सब की रूपरेखा दी हुई है. I think that's, for me, that seems to be the operative part. And there will be, you know, things that don't seem very congruous with how we understand the Buddha is encouraging us to develop our hearts. That's how I see it. But perhaps Dharsa wants to add something. It has been a problem for all of us when we started with the teachings and understanding the, you know, even starting from the courses of Vipassana, there also we used to see very strident comments on the other traditions. And then when we study the suttas, we find a number of places. In fact, because the Jain followers were contemporaneous with the Buddha, so there's a large number of suttas in which the former Jain followers come to Buddha to question him and to show him down, because there was this tradition of debate. So there are a large number of such suttas, and where they actually say that we have come here. Ultimately, when they get convinced about the incorrectness of their presentation, of their position, they say that we had come here originally to dispute with you and to disprove what you are teaching. So this tradition of disproving the teachings had been a part and parcel of the Indian tradition for thousands of years. So today, because we tend to be eclectic, we tend to see it as it doesn't sit well with us. We feel somewhat, and we have that feeling, na sab kuch ek hi to hai, kya farak padta hai. But for a person who's really seen through whole things and who's able to see the pitfalls in this kind of a, you know, eclectic attitude, the teacher is pretty clear that he's going to point out to them, otherwise it will be problematic. Example, the very first sutta of Dighnakaya, Brahmajala Sutta, these 62 different philosophies which are extant at that time. And it shows all of them to be wrong. Now one can say this is very, very kind of, you know, a very limited attitude, or a, you could say, by God, I don't know how to use that word, but you could say that it is a attitude of very limited perception, and you're not trying to understand others, and you think that others are wrong and you're right, and it's a holier than thou attitude. One can take that position. But when you see, when we have seen the, for example, those 62 philosophies, since I myself followed many of them, including the Vedantic philosophies and others in the beginning, then when I studied them, I did find very irritating. But as I go through it more peacefully, looking at the fact that an enlightened one is saying it as a matter of fact. He's not saying it to pull down others or say it. He's saying it as a matter of fact to explain that these are the limitations of various theories. So there are suttas in which similarly, you know, some of the followers come to dispute him very strongly and kind of
humiliate him. There's that Mahasachaka Sutta about which we talk in अपने उसमें क्या है वो जय मंगल अट्ठगाथा में एक सच्चक का भी वृतांत आता है ना, सच्चक जो वाद विवाद में बहुत एक्सपर्ट था. So he tried to ask questions in such a rude way to put him down. हाँ आपको तो मैं फीलिंग्स हुई नहीं ना जितनी, इसलिए आप कहते हैं कि ये फीलिंग्स आपको इन्वेड नहीं करती माइंड को. And thanks to that question, Buddha explains to him what feelings he has gone through in the 6 years of ascetic practices. So that question itself becomes a boon for the meditators and for the students of the Buddha, because that's the only place where Buddha lays down what kind of practices he did for the 6 years. So these kind of things are permeated throughout the suttas, especially about Jains and also about other teachers, students of others. So we study in the Parayan Vagga. There also the students of Bavari come and question him on various issues. So that has been a tradition, and it was in the past, it was not looked down upon as something as we would tend to see it today, as a very limited perception and not trying to take everybody along and so on. So it's a question of the cultural ethos which existed even till the time of 8th century AD, when Adi Shankaracharya kind of demolished all the existing Buddhist scholars and showed to them that their understanding was not correct, and therefore they couldn't survive behind. After him, philosophical standing of Buddhism was almost finished in India. So that has been the tradition of our country. And while we have the tradition in Vedas that we accept good teachings from everywhere, but it doesn't mean we accept every teaching from everywhere. So there's a kind of caveat everywhere. So we have to see it in that light, that, yeah, this is the way the teachings, the culture of that time was, that in order that people don't get, and in fact in another sutta, that Mahaparinibbana Sutta, Buddha clearly points out what he expects from his students, from his disciples, monks as well as lay people. तो उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई बाहर के दूसरे ट्रेडिशन के लोग उनसे डिस्प्यूट करने आए, they should be able to explain them and refute the questions they are being asked to them. कि कोई अगर आपसे कहता है कि आपकी टीचिंग गलत है, तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए ये बताने की कि इसमें गलत क्यों नहीं है और क्या ठीक है. So that discourse itself shows that must have been the culture, and we know that has been the culture of this country. Thank you, Professor Dhar. Very, very detailed answer. Thank you very much. Okay, so threes का शुरुआत हम करते हैं. There are teachings grouped by 3 that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings grouped by 3? So पहले 2 काफी सामान्य हैं, हम लोग परिचित हैं. 3 अकुशल मूल और कुशल मूल, लोभ, दोष और मोह as अकुशल मूल, unskillful roots, और कुशल मूल अलोभ, अदोष, अमोह. तो जैसा कि हमने पहले इनिंग्स में किया था, हम लोग बेसिकली उन पे रुकेंगे, उन बिंदुओं पे रुकेंगे जो कि या तो सामान्य रूप से हम लोग डिस्कस नहीं किया है हमने, और कुछ नया है, कुछ अलग है, या वो पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हम सबकी प्रैक्टिस के लिए, धर्म में प्रगति के लिए हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं. तो दैट्स वेयर वी विल स्टॉप. सो इफ यूड लाइक a discussion on something that we are not stopping, please go ahead and interject. जो अगला पॉइंट है दुचरित, अब ये काफी इंटरेस्टिंग है. So I'll take this forward और फिर I'll offer some thoughts. काया दुचरित, वाची दुचरित और मनो दुचरित. अब हम लोग काया और वाची से तो परिचित हैं. So the interesting thing here, and of course it's quite logical, कि काया और वाची का जो बेस है, जो मूल है, वो obviously मन में उठने वाले
अकुशल कंटेंट हैं। तो इसके जो नीचे के पॉइंट्स हैं अगर हम देखें, इफ यू, या दैट्स राइट दर्शन, थैंक यू, वेरी गुड। जो वितक संबंधित पॉइंट्स हैं, संकल्प संबंधित पॉइंट्स हैं और संज्ञा संबंधित पॉइंट्स हैं। सो नाउ इफ वी सी केयरफुली व्हाट्स हैपनिंग इज कि I'll just go down and then come back. जो अकुशल वितक की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। सो काम वितक, व्यापाद वितक, विहिंसा वितक। सो थॉट्स वितक, बेसिक इनिशियल थॉट्स, सेंसुअलिटी, इल विल, क्रूअल्टी। इसी तरीके से संकल्प, काम, व्यापाद, विहिंसा। इसी तरीके से संज्ञा। So we can see किस तरीके से ये actually they all follow कि जो मन में अकुशल harmful आचरण उठता है, that comes out of अकुशल वितक, जिसके 3 कैटेगरीज दी गई हैं। इसी तरीके से अकुशल संकल्प, इसी तरीके से अकुशल संज्ञा। So एक तरीके से we can see how this whole set of 4 sort of hangs together. और usually जैसे कि मैंने बात की, हम मन की in terms of आचरण, हम मन की इतनी बात नहीं करते हैं। आचरण का ज्यादातर फोकस वाणी या बॉडी पे रहता है। So here the element of मन comes in। और फिर मन का जो आचरण है, मन का जो बिहेवियर है, वो किस चीज से गवर्न होगा, किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा, किस चीज से कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसका फिर नीचे हमारे पास डिटेल आती है कि जो अकुशल है, जो मन का दुश्चरित है, दैट कम्स आउट ऑफ काम, व्यापाद एंड वायलेंस एंड क्रूअल्टी in terms of thoughts, intentions and sanya, our perceptions. And then of course the reverse, अगर जो कुशल आचरण है, जो मन का सुचरित है, that is coming out of वितक। किस तरह के वितक, किस तरह के विचार? निखम्मा के। निखम्मा of what? Renunciation of what? Renunciation of सेंसुअलिटी, जो पहले काम की बात की गई है। एंड देन इसी तरीके से जो रिवर्स है उसके गुडविल, हार्मलेसनेस, और फिर संकल्प, संकल्प ऑफ रिनंसिएशन, संकल्प ऑफ गुडविल, ऑफ हार्मलेसनेस, एंड सिमिलरली संज्ञा। Now the other interesting thing that we thought we could point out is कि usually संकल्प की तो जो 8-fold path है उसमें बात होती है, पर जिस तरीके से संज्ञा यहाँ पर काम, व्यापाद और विहिंसा के टर्म्स में बताई गई है, इट्स प्रोबेबली समवॉट यूनिक। कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इस तरीके का डिस्क्रिप्शन और जगहों पर नहीं देखा है। आजकल हम संज्ञा का डिस्कशन भी कर रहे हैं, वी कैन सी दैट ये जो प्रेजेंटेशन है एक तरीके से एक यूनिक प्रेजेंटेशन है। सो इन दैट सेंस इट्स परहैप्स समथिंग यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर अस टू कीप इन माइंड, अपनी खुद की समझ बढ़ाने के लिए। बट मोर देन समझ, वी कैन सी कि हमारे एक्चुअली एक्सपीरियंस में एग्जैक्टली इसी तरीके से आता है कि जो अनस्किलफुल स्टेट्स हैं, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर परसेप्शंस and certainly of our thoughts. Now obviously thoughts are coming out of perceptions and influencing each other. और इसी तरीके से जिस तरीके के हमारे intentions बनते हैं in terms of sensuality, in terms of violence, in terms of cruelty, in terms of ill will. So this set of 4 we thought we could kind of present it together. Yeah, the other thing that जो मैंने अभी जो पहला सेट है काया, वाची और मनो का, we can also see कि किस तरीके से, yeah, Nikhil, just moment, let me just finish quickly. I'll invite Dharsab and then we can get into a discussion. So very briefly, जो मन के जो elements होंगे, they will also manifest in terms of what happens in body and speech. So it's working both ways. Dharsab, would you like to perhaps add something before we take Nikhil's point? Not really. I would suggest that we include these dhatus also in it.
Okay, very good. So Nikhil, just give us maybe 2 more minutes. अब जो अगर हम नीचे देखें, अब ये भी एक तरीके से कनेक्टेड है. जो धातुओं का यहाँ डिस्क्रिप्शन है, धातु एलिमेंट्स में भी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस. फंडामेंटली हमारा किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है. सो दे आर एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो यहाँ बताए गए हैं. बिफोर वी गो इनटू दीज धातुस, हमें इट्स यूजफुल टू रिमेंबर जो मध्यम 115 है, धर साहब ने यहाँ मार्क भी किया हुआ है इस टेक्स्ट में. वो अलग अलग तरीके से बुद्ध जो आनंद को धातुओं के बारे में बताते हैं, वहां पे उसका नैरेटिव है. सो हम कईयों से तो हम परिचित हैं, जो बेसिक 4 धातुज हैं उनसे हम परिचित हैं, फिर 6 धातु, फिर 18 धातु एंड सो फोर्थ. सो वी आर फेमिलियर विद दैट. यहाँ जिस तरह से डिस्क्रिप्शन है, दिस इज सॉर्ट ऑफ फाउंड इन मध्यम 115, जिसका कि यहाँ नोट किया गया है, but possibly not in its entirety. So let's understand कि यहाँ धातु जो दिए गए हैं, वो जो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया, उसमें किस तरह से how they contribute to that. So काम धातु, व्यापाद, विहिंसा, quite the same as the lists earlier. And clearly what's happening is that these are our basic building blocks of our experience. जो एक डेफिनेशन एलिमेंट की ये भी है ना, कि इसको हम और विभाजित नहीं कर सकते. दैट दिस इज अ फंडामेंटल एक्सपीरियंस एंड वी कैन सी हाउ इट वर्क्स. सेंसुअलिटी, इल विल और क्रूएल्टी का जो एक्सपीरियंस है, it's very base, it's at the very base of our primary defilements of greed, hatred and at least greed and hatred. Delusion is perhaps a more umbrella category. So now I draw your attention to something very interesting that happens. Pehli list is pretty standard. अकुशल धातु और कुशल धातु. और अकुशल में वही काम धातु, व्यापाद, विहिंसा, और कुशल में निखम्मा, अव्यापाद, अविहिंसा. और अब जो अगली लिस्ट है, इसमें एक एडिशनल एलिमेंट रूप और अरूप धातु के 2 एडिशनल एलिमेंट्स आ जाते हैं. So the way I would say since these form a similarity, we could stop here. उनको फिर बाद में ले लेंगे. Sure, yeah, sure. क्योंकि ये सब एक जैसे थे ना चारों, इसलिए मैंने आपसे निखिल की बात सुन रहे थे क्या कहता है. सर ये प्लीज कंडक्ट बढ़ रहे 3 तरीके से, बाय माइंड, बाय स्पीच एंड बाय बॉडी. तो क्या जब हम सम्मा कम्मंतु की बात करते हैं, तो जो कम्मंतु क्यों बोलते हैं, सम्मा कम्मो क्यों नहीं बोलते, वो कर्मांत है क्या? Yeah, kammanta means, which is the end of karma, actually is intention. So kammanto means the consequence of intention, which is the bodily action. That's it. Okay, जैसे हम मतलब मनो कर्म और वची कर्म, मन से और वाणी से फिर भी थोड़ा कम हार में, काय से कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए. Because वो तो हमारे विजिबल ही है ना. आप किसी को गुस्सा होकर जोर से बोल दें और गुस्से में उसको पत्थर मार दें या कुछ मार दें, तो obviously the consequences would be, in conventional world also, would be grave. Okay sir, ठीक है, thank you. You could ask for any questions on these, because there's actually 8-fold path. Samma Sankappo, it's called Kushala Sankappa, you can call it Samma Sankappo. Is this? These things are part of Tanise Katmase Vikve Samma Sankappo. We recite this. Nekhamma Sankappo, Abhyabada Sankappo, Avahimsa. This is a part of our recitation of 8-fold path. तो उसी के ऊपर उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने सारिपुत्र जी ने हमने समझाया है. तो इस पे अगर कोई प्रश्न हो तो we can take it. Then we'll take up the dhatus, because that discourse itself is very wonderful, and with Bhanteji's permission, we'll like to quickly go through that also. So basically, what it is implying is that there is a close connection between intentions and thoughts. Yeah. I think that is how I seem to read it. And perceptions. And perceptions. हम हो सकता है कुछ भी ना कर रहे हो,
लेकिन हम चीजों को उस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ भी इवेंट हो जाता है बाहर का, उसको इन 3 कैटेगरी से रिकॉग्नाइज करेंगे। सेंसुअलिटी की, इल विल की, क्रुएलिटी में तो हमारे उस तरह के परसेप्शन बन जाएंगे, फिर उस तरह के विचार आएंगे, ध्यान करने बैठेंगे तो उसी तरह के विचार आएंगे, जीवन में भी उसी तरह के विचार आएंगे, और फिर उसी तरह का हमारा इंटेंशन बन जाएगा। तो कहा जाता है ना, एज यू थिंक सो यू शैल बिकम, एग्जैक्टली द सेम। थैंक यू। आप मध्यम 115 खोल रहे हैं धरसान? हाँ, आप पहले इनको कर दीजिए, यू कैन एक्सप्लेन देम, देन आई रीड आउट सम एक्सपर्ट्स। आप तीनों सारी धातुएं जितनी भी हैं इनको थोड़ा बता दीजिए। Okay, so अब आगे बढ़ें. So then we have additional categories. काम धातु तो हमने पहले देखा. Then we have रूप and अरूप. धर ये धातु वाला पार्ट थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे ठीक से? Not able to exactly see a connection. हाँ, वो क्योंकि सारिपुत्र जी जो है वो सारी टीचिंग को एक तरह से उसको समाहित करना चाहते हैं। तो धातु का मतलब हुआ कि जो हमारे बेसिक रॉ एक्सपीरियंसेस हैं। तो सामान्यतः तो 6 धातुओं की बात की जाती है, 4 धातुओं की बात की जाती है। हम कहते हैं ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, आपो, पृथ्वी, तेजो, वायु, or sometimes use 6 for the sentient beings. This is the usual terminology which is commonly used, जिससे हम familiar हैं. But here the expansion is given. It is based on Buddha's discourse only. So he is explaining that धातु को उतनी limited form में मत देखिए. जो भी आपके experience हैं, जो कि उससे ज़्यादा तोड़े नहीं जा सकते, वो distinct है एकदम. Sensuality का experience अलग है, renunciation का अलग है, और जैसे अभी बंते जी बताएंगे, फॉर्म रूप धातु का अलग है, अरूप धातु का अलग है, काम धातु का अलग है. They are totally different experiences. You cannot kind of explain one in terms of other or have a subdivision of it. तो जैसे साइंस में भी एलिमेंट उसी को कहते हैं which cannot be, कहते थे सॉरी, कि जिसको और टुकड़े में ना बांटा जा सके. बिल्कुल वैसे ही ये भी एक तरीका था समझने का. ये जो अभी आप बता रहे थे, तो अभी जैसे हम धातु हम समझ रहे थे कि एलिमेंट्स के बारे में समझ रहे थे. तो ये काम इज एन एलिमेंट एंड रूप इज एन एलिमेंट, रूप इज एन एलिमेंट और निरोधा धातु. तो ये मैं ऐसा करता हूँ बंदे जी, हम ठीक ही कहा था, मैं सुत्ता ही पढ़ देता हूँ थोड़ा, उसका मतलब ब्रीफ पढ़ देता हूँ. तो वो डिस्कशन हो रहा है भगवान आनंद से, जैसे उनकी आनंद जी की कृपा रही है कि बहुत सवाल पूछते थे, हमारा कल्याण हो गया उससे. तो पूछते हैं, वेनरेबल सर, हाउ कैन ए भिक्षु बी कॉल्ड अ वाइज मैन एंड एन एनक्वायरर? सी द क्वेश्चन. So it says, when Ananda, a bhikkhu is skilled in elements, skilled in the bases, skilled in dependent origination, skilled in what is possible and what is not possible, in that way he is called a wise man and an inquirer. तो इतनी सारी स्किल्स उन्होंने बताई. तो इसमें यहाँ पे एलिमेंट्स की बात वो कहते हैं. अच्छा, वो फिर पूछते हैं सब स्किल इन एलिमेंट का क्या मतलब है. तो द बुद्धा स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ 18 एलिमेंट, जो इसमें है ही नहीं, जो कि हम अपनी चैंटिंग बुक में भी हमने डाले हुए हैं. हाई एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट, आई कॉन्शियसनेस एलिमेंट, एंड सिमिलरली फॉर ऑल द सेंस डोर्स. Then he says, but venerable sir, can there be another way in which these elements, skill in elements can be gained? He says, yes, surely. So he tells you, then फिर वही बाकी एलिमेंट आने लगते हैं. Then he says the 6 elements, earth element, water, fire, and so on, which we are familiar. Again वो पूछा कोई और तरीका है क्या? तो कहते हैं हाँ, these 6 elements, the pleasure element, the pain element, the joy element, the grief element, the equanimity element. Now these are not listed here. See, so these are the other elements. Then again ask कोई और element भी है. हाँ जी, sensual desire element, वो आगे अब हमारे जो अभी किया हमने, the renunciation element, ill will element, non ill will element, cruelty element, and the non cruelty. So जो अभी बंते जी ने समझाया था, जो पुराने चारों इंटेंशन से जुड़ा रहा था. फिर पूछता कुछ और भी तरीका हो सकता है. हाँ जी,
सेंस स्फीयर एलिमेंट, फाइन मटेरियल एलिमेंट एंड द इमटेरियल एलिमेंट। तो ये आ गया काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु। फिर एक और तरीका हो सकता है, वो कहते हैं हाँ ये दो ही समझ लो, एक कंडीशनड एलिमेंट, एक अनकंडीशनड एलिमेंट। So these are the various ways in which the Buddha tries to teach us how to categorize the experiences in various ways. तो ऐसे समझ में आती है बात। और ये सारे ही उन्होंने धातु कहा है। IMN 115 ये लिखा हुआ है मध्यम निकाय 115। और ये सारे धातु हैं। हाँ, एक्चुअली हमारी आजकल की टीचिंग ऐसी हो गई है ना, हमारी स्टडी ऐसी हो गई, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो भाई 118 है तो 118 ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे 110 और कहीं पे 2 ही हो जाए। तो द टीचर लाइक बुद्धा is not confined to those kind of definitions. He'll explain it because it's a matter of experience, and it's a question of how do you categorize the experience. So कभी 6 एलिमेंट हैं, कभी 3 हैं, कभी 18 हैं, कहीं 2 ही हैं, and you can see the value of each of them because they are being categorized according to their particular quality. एक conditioned element सारे conditioned हो गए, unconditioned सिर्फ एक रह गया. So conditioned elements includes all of these which are listed earlier. So this is a very interesting way because this is the way you inquire. This is the way you become, as he says, how can a man become a wise man and an inquirer? So this is how the various ways in which you inquire and gain wisdom to the extent. Why do you want to do that? So that we gain full confidence in the teaching. जैसे मॉर्निंग में चर्चा हो रही थी धम्मानुसारी, जो कोई धम्म के प्रति श्रद्धा हो। कब श्रद्धा होगी? Then you understood it to totally unshakable confidence. You understood it thoroughly. There's no doubt remaining of any kind. Then you have faith in that sense. Saddha is strengthened in Buddha, Dhamma and Sangha. Cessation भी element है। जी, it's a different, unique experience. होता है ना जब, I mean, if we see the limited experience of cessation of suffering which we experience, it's quite different from all other experiences. The peace of different kind. यदि अपनी भाषा में हम समझना चाहें, जी, हिंदी में, जी, तो एलिमेंट जैसे धातु हम कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको कैसे एक लेमैन की तरह हम समझ सकते हैं? हाँ जी, ये अनुभव कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए। अनुभव, ओके, विभिन्न प्रकार के अनुभव और उनको किस प्रकार के अनुभव कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। या दैट मेक्स सेंस, या वो समझ में आता है। अच्छा, अनुभव is a loose word, no? That's the one. Element is a very strong word because it says you can't break it down into further subdivisions. उस सेंस में इसका महत्व है, क्योंकि अनुभव तो is a generic term for anything, but from the point of view of understanding, it's good enough. Yeah, because अनुभव समझ में आती है बात ठीक तरह से। Actually, Satipatthana Sutta में now it makes a little more sense. There is a talk about arising and staying and going away of dhatu elements, dhatus. वहाँ पे तो वही धातु मनसिकार पब्बम में 4 धातुओं की बात, because they are the ones which are constituents of kaya, क्योंकि वो काया अनुपासना वाले सेक्शन में है, तो काया के जो रूप के जो 4 कंस्टिट्यूएंट्स हैं मेन, उन्हीं की बात है उसमें। तो ये भी एक बड़ा स्कॉलर्स में इंटरेक्शन डिस्कशन आप देखेंगे अगर लिटरेचर में, 4 धातु हैं कि 6, आप करते रहिए डिस्कस। कोई कहेगा इस सूत्र में 4 है, कोई कहेगा उस सूत्र में 6 है। So it's very, I mean, if you are really getting into scholarship, तो फिर तो कहीं सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। बट इफ यू आर अ मेडिटेटर, यू अंडरस्टैंड। आकाश भी तो एक धातु माना जाता है। हाँ, तभी तो 6 तभी तो हुए ना। हाँ, 4 तो वो हो गए, और फिर उसके बाद आकाश एंड विज्ञान, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो इन द 6 एलिमेंट्स। देयर इज अर्थ, एयर, फायर, वाटर
space and consciousness. अब उसी पे इतना डिस्कशन होता है, कॉन्शियसनेस एलिमेंट कैसे हो गया, ये तो कंडीशनड है, ये तो ये है. So you can interminably discuss. Once you say it is a matter of experience, and we know we have the idea of consciousness as an experience, the ability to know, finished. Yeah, we know. As all sentient beings, not only humans, animals also, they have the ability to know. That is called, and which is distinct from earth, air, fire, water, space. So जो डिस्टिंक्शन है उनका मतलब बिल्कुल कोई उसमें ओवरलैप नहीं है, and you can't break it down into smaller parts. So that's a kind of rigorous definition of dhatu, which is exactly which used to be the scientific definition before these fundamental particles came into being. इंक्वायरर की पाली क्या है जी? इंक्वायरर की पाली इंक्वायरर मेरे पास इंग्लिश वाला, मुझे देखना पड़ेगा क्या वर्ड यूज किया है इन्होंने, मैं देख के बताता हूँ. इल विल कैसे एलिमेंट है? आप देखिए, इल विल का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं, दुर्भावना जागती है किसी के प्रति, खासतौर पर जब हमें किसी पॉलिटिकल नेता के बयान से परेशानी होती है. नहीं, इट्स मैटर ऑफ जैसे फायर, अर्थ, वाटर, एयर, कॉन्शियसनेस, स्पेस, ये जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. नहीं, कोई चीज नहीं है, प्लीज. दे आर नॉट थिंग्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन द नेचर, प्लीज. They are experiences. He's not talking in terms of things like science. मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ. We should not commit that mistake. He's not describing the world as it is. He's describing the world as we experience it. So ये कहना कि चीजें earth, air, fire, water से बनी हुई है, it's not correct. They are not. चीजें उस तरह से एक्सपीरियंस होती हैं. किसी भी रूप का अनुभव उसी तरह से होता है, इसीलिए उसको क्योंकि संसार जो है, जैसे कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, भगवान की शिक्षा में संसार का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट द वर्ल्ड एज इट इज. दैट वी हैव टू अप्रिशिएट. Very important distinction. That's why he's called a phenomenologist. He's not an epistemologist. वो define करेगा कि ये क्या है, knowledge नहीं देना चाहता. He wants to define the experience. Even Akash or space is a kind of experience in this context. The experience of emptiness is related to the element of Akasha. So when you have the formless meditations, they are that. जो इंक्वायरर आपने पूछा था ना, वाइज का तो है पंडितो, वो है विमांसको. मीमांसा आप याद है ना हमारा, इट इज वन ऑफ द इद्दिपादास, जो चौथा इद्दिपाद है. He is called one who investigates, one who inquires. That is the word used. किसी ने पूछा था ना पाली वर्ड क्या है, so that's it. Thank you. Good. So over to you, Bhante.
sorry to ask this, but धम्म और धातु एक्सपीरियंस आपने बोला कि धातु में भी एक्सपीरियंस है और धम्म में भी एक्सपीरियंस. So how to they are treated in text as synonyms. उनको सिनोनिम माना जाता है, पर्यायवाची शब्द. हम पढ़ते ये विपस्सना भूमि पाठो, इसमें 18 धातु है और जो धम्म संगनी है. धम्म जो है ना, it is more generic term in terms of all things. धातु is specifically those which are unique experiences. तो उस सेंस में जब भी मैं कह रहा हूँ, उस सेंस में थोड़ा डिफरेंस है. But generally, in common parlance, they are treated as similar. So can we think of Dhamma as some kind of equivalent of compounds and dhatus as elements? Does it make sense to talk like that? Dhamma includes compounds as well as elements. Everything. Yes, of course. I mean that. Yeah. So it's, as you were saying, it's more inclusive. It includes everything. जी. सर एक एग्जांपल भी थोड़ा सा दे पाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. थोड़ा सा अगर किस चीज का एग्जांपल? सर धातु और जैसे धम्म की बात करते तो एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि अगर जैसे हम पृथ्वी धातु की बात करते हैं तो बहुत भारीपन हो रहा है. सो यू एक्सपीरियंस दैट. और जब हम धम्म की बात करेंगे तो धम्म भी भारीपन. Yeah, that's an experience. That is, yeah, that is. If you see the experience of the word धम्म है ना, इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग, मैंने कहीं पहले भी निवेदन किया था, अलग अलग मीनिंग दिए गए. तो अगर आप इसको उस सेंस में लेते हैं, जेनेरिक सेंस में, तो then there is a part of a theory called the Dhamma theory, which means the description of the reality. So that's the way we talk of. So everything is talked of as Dhamma. Then we say Dhammas are of 4 kinds: Chitta, Chetsika, and Rupa, Chitta, Chetsika, and Nibbana. 3 are conditioned, 1 is unconditioned. So they are all called Dhammas. तो अगर आप विधम्मा पढ़ेंगे तो it starts with that really. Vidhamma, I can read it out to you. It starts with that basic definition of the 4 aspects. ये जो लिखा है another 3 elements, lower, middle and higher. What is this? This is anybody's guess. We couldn't find anything. All I can say is the lower realms of existence, the middle level is the human realm of existence, and the higher realms of other realms. Because इसके बारे में इसमें explanation नहीं था. I don't think it was there in it. So it may be in some other sutta which we couldn't find out. हीना का मतलब होता है ना, जो हीन है, नीचे लोअर काइंड के, जो which are of lower category, Madhyama, and Panita is the excellent or higher. ये मतलब इसमें से आप डिटेल डिस्कशन चाहिए कि ये तो दिमाग में जा नहीं रहा बिल्कुल. नहीं, we have to understand कि इस चीज का सारे का उद्देश्य क्या है, ये समझने की बात है ना. इस चीज का सारे का उद्देश्य ये है, जितना मेरी समझ में आता है, कि हमारे कुछ एलिमेंट्स, एक्सपीरियंसेस जो है वो यूनिक हैं और उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है. दैट्स इट. और जो हमारी आदत है, फिक्स्ड आंसर टू ए क्वेश्चन, हाउ मेनी धम्मास आर देयर, सो मेनी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, सो मेनी.
or what happens when hydrogen oxygen mix water. We want a discrete deterministic answer. That is not there in Dhamma. We have to understand that. Because these are all matters of experience, and matters of experience you can categorize in different ways. You categorize some as skillful, some as unskillful, some on the basis of their being formed or formless, some on the basis of their ethical quality, lower, middle, higher. So it could be ethical quality of the experience, the experiences which are unwholesome, experiences which are neutral, experiences which are exalted. Then there can be other ways, the experiences of matter, then the experiences of classified on the basis of six senses, experiences has classified on the basis of matter. So these are the various ways. So we have to expand our vision to see that you can understand a concept in variety of ways. So we don't have to get fixed ki ye pata nahi lower kya hai, middle kya hai. We understand. I have not been able to locate its reference because it's impossible to get references. They are just found in one sutta in the whole Tipitaka. वो कहाँ है वो सर्च में निकलता ही नहीं. कभी निकल गया तो पता चल गया. Otherwise पता ही नहीं चलता है. So well, I mean I'm sure if I was to spend hours and hours, somewhere कहीं ना कहीं तो होगा ही. Unfortunately, many of them are there in the अभिधम्मिक part. So उसमें से उसका translation उपलब्ध नहीं है और उसमें explanation भी नहीं है. तो हमको खुद ही अपनी समझ से लोअर मिडिल हीन का जो डेफिनेशन ही है वो नीचता से होता है जो थोड़े लो क्वालिटी के हैं. तो आई सी दीज एज ethical categorization. This is ethical categorization of the experiences. Unwholesome, wholesome, and neutral. Ethically neutral experiences. Or you could say in terms of the experiences of the various realms of existence. So both of them will be, I mean, there's a sutta in which Buddha gives one verse of 4 lines. And there are 6 bhikkhus से अच्छा इनका मतलब सोचो और फिर शाम तक मुझे बता देना. All 6 of them give different interpretations. And he says, all of you are right. But what I had intended at that time was this. So we must have that ability to be confident that, yeah, there cannot be anything. This is also valid. Maybe Buddha intended something else. But when I say that another 3 elements on ethical grounds, it is not wrong. Why? Because that kind of categorization has not been given strictly. Okay? Though there is kama and vyapada vihimsa, it doesn't include all possible unwholesome mental states. So that's how I say, and I can confidently say it's not wrong. But whether the Buddha actually intended it, I can't say that, because that I have to look up the reference and find whether there was something or not. So we, all of us, must have that confidence that we understand the overall context of the teaching. And therefore, we don't have to feel lost कि यार ये पता ही नहीं चल रहा. क्यों नहीं पता चल रहा भाई? काम का एक्सपीरियंस अलग होता है, व्यापाद का एक्सपीरियंस अलग होता है, हिंसा का एक्सपीरियंस अलग होता है, रिनाउंसिएशन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है, सद्भावना का अलग होता है, दुर्भावना का अलग होता है, मैत्री का अलग होता है ना. So you know that it's all within our experience. जनरल पार्लेंस में अगर देखें, जो बात हम समझते हैं वो ये है कि भाई इलविल ठीक नहीं है, उसकी जगह गुडविल ठीक है, हार्मलेसनेस ठीक है, क्रुएल्टी ठीक नहीं है, और सेंसुअल होना ठीक नहीं है, रिनंसिएशन ठीक है. अब इसको आप परसेप्शन कहें, इसको एलिमेंट कहें या कुछ भी कहें, बट बेसिक तो ये समझ में आना चाहिए कि ये चीजें अकुशल हैं, ये कुशल है. हाँ, लेकिन ये कैसे बनी ये देखना है ना. ये इनका वही तो कह रहे हैं, इसको बांट काट के समझा रहे हैं. कहने से क्या होता है ये कुशल है कुशल है, हमारे जीवन में आ रही है कि नहीं आ रही? वो तो जाहिर है कि आ रही है, वो एक्सपीरियंस की जा रही है, तभी तो पता लग रहा है. हमारे अनुभव में आ रही हैं. तो अगर उसको जहां पे हमारे अनुभव में वो नहीं हो पाती, या हम कभी हम इलविल कर बैठते हैं, कभी क्रुएलिटी कर बैठते हैं, कभी काम धातु में फंस जाते हैं, देन वी हैव टू सी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा. तो वी विल सी कि अच्छा ये परसेप्शन की प्रॉब्लम है
or am I constantly thinking like that, or constantly exposing myself to such TV programs, such music, such people, so that my perception has become like that? सब मुझे कोई भी संसार में ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, मुझे लगता है सब लोग मुझे लूट लेंगे. That's a perception. उसको मैं एलिमेंट कैसे समझूं? मतलब वो परसेप्शन तो मैं समझ रहा हूँ. एलिमेंट है कि एक्सपीरियंस अलग है ना यार. That kind of a perception is totally different from other perceptions. And that perception is not the implementation of it. It is this root which forms, which grows into thinking, and which thinking grows into intention, and intention goes into action. Then it results in ducharita or sucharita. So all these are connected, and there's a sequence between them which we all know. अगर हमें मालूम है तब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं तो मालूम नहीं है तो हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे. हाँ, सेंसुअलिटी बहुत गलत है, हमको नहीं करनी चाहिए. ऐसा नहीं है, फिर भी हमसे हो जाता है. कई सेंसुअल चीजें जो है, कई कामनाएं हमारी समाप्त हो गई हैं, लेकिन कई बची हुई हैं. कई जगह पे अब इलविल नहीं जागती, कभी कभी जाग जाती है. कई जगह पे हिंसा की बात आती ही नहीं है, कई जगह कभी कभी आ जाती है. वो क्यों बच गया है? हमको अशेष विराग निरोधा की तरफ बढ़ना है ना. हमको काइंड ऑफ जनरलिटी में, हाँ हमें क्रुएलिटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते जा रहे हैं. उसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे क्यों हो रहा है. But because we are exposed to those kind of things, those kind of thinking processes, those kinds of debates we have with people, those kind of arguments we have with people, those kind of TV programs we see, those kind of musics we see, those kind of discussions we do, and we think ये तो बहुत normal है, तो common है. भाई उस तरह के डिस्कशन करेंगे तो उस तरह का हमारा थिंकिंग प्रोसेस बनेगी, उस तरह का परसेप्शन आएगा, और उस तरह का हमारा काम धातु नहीं हटेगी, रिनंसिएशन नहीं होगा उस डायरेक्शन में. उस डायरेक्शन में गुडविल नहीं जागेगी, इलविल ही जागेगी. उस डायरेक्शन में हार्मलेस मैत्री नहीं जागेगी, क्रुएलिटी ही जागेगी. सो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग टू फोकस ऑन. अगर हम इसको गहराई से इनको देखेंगे तो इनका बहुत भारी महत्व हमारे साधना में है हर एक का. क्योंकि हम उसको ऑमनीबस सेंस में देख लेते हैं, फिर कहते हैं हाँ मुझसे हो नहीं रहा, ये नहीं हो पा रहा. क्यों नहीं हो पा रहा? यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट. क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ मुझे और साधना करनी है, चलो मैं और देखता हूँ, मैं और अपने जिसको हम साधना कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, सांस को देख रहा हूँ, बॉडी को देख रहा हूँ, या मैं ओपन अवेयरनेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. बट वो कहाँ पे उसकी, कहाँ से वो अक्रुशल परसेप्शन बन रहा है, उसके ओर हम ध्यान ही नहीं दे पाते. क्यों? उसको हमको सोचता ही नहीं है कि इससे भी कोई फर्क पड़ता है. अरे ये तो कॉमन पीछे मित्र मिल गए, बातचीत कर ली तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है. आई मीन दिस इज, ये तो सामान्य संसार की बातें हैं. संसार में जाएंगे तो मित्रों से बात करेंगे तो उनसे हम छोड़ना कहेंगे हम तो साधक हैं, हम एक बात नहीं करनी चाहते. हाँ, उस वातावरण में कैन वी इन दैट environment where there is all talk of ill will, can we include goodwill? That's the challenge. If you will do that, then these perceptions will change. They will not change by anything else. It may sound very harsh statement. Perception को आप किसी और साधना से नहीं हटा सकते जब तक आप डीपली रिफ्लेक्ट करके उसको देख नहीं सकते, उसके इल इफेक्ट को देख नहीं पाते. जो चीजें हमें बड़ी सामान्य लगती हैं, वही चर्चा कर रहे हैं किसी इशू के बारे में, आज कश्मीर के बारे में, यूक्रेन के बारे में, कुछ भी पॉलिटिक्स के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, बहुत समय, हाँ बिल्कुल ये तो ये पॉलिटिकल पार्टी तो गई है, तो ऐसी है वो ऐसी. एंड वी क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ परसेप्शन that results in that kind of thoughts, that results in that kind of intention, and that results in that kind of actions. And then we feel यार साधना में फायदा नहीं हो रहा, इतनी साधना करता हूँ फायदा नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि कहाँ पे हमने साधना में सेंध लगा दी. So to me this seems important from that perspective, and I see it seems to be correct. आप भी विचार करके देखिए, अगर आपको लगे कि नहीं तो then you can discuss it some other time. बहुत क्रिप्टिक है हर्षा भी. Yeah, That is the problem.
I think we have to go back to the suttas and understand from there. Yeah, that's true. क्रेविंग भी समझ में आ गया और परसेप्शन भी समझ में आ गया, खाली एलिमेंट्स में अटक रही है गाड़ी, इसमें देखते हैं और हाँ, फिर ठीक ध्यान ठीक। करें, देखते हैं। जी जी। Over to you, Bhante ji. Very good. Thank you. Thank you for that rich discussion. Very helpful. Extremely helpful. So the जो हमने हल्का सा skip किया है, just to go there, ये जो रूप और अरूप है, so it's described as experiences in jhan और also experiences उन लोकों में, अरूप लोक में, रूप ब्रह्म लोक में, etc. So that's how it's described, and that takes care of dhatus. The next category, again, pretty straightforward, pretty clear. We discussed it many times. जो तन्हा के तीन यहाँ पर हैं. But the next categorization of tanhas is perhaps not that well discussed. And so how काम तन्हा के अलावा जो रूप तन्हा और अरूप तन्हा है, the way we could understand it, and I think we have a sutta reference for this जहाँ तक मुझे ख्याल है, the way we can understand this is craving for rebirth in similarly those realms. फिर से हम realms में वापस आ गए, craving for rebirth in Rupa realms, in specific Rupa realms, and so on and so forth. So और जो काम तन्हा है वो तो it's pretty clear, इसकी तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं. So that's how the additional categories of tanha are described here. Now very interesting, जो next categorization है उसमें अगर आप आखिरी बिंदु देखें, there is also nirodh tanha. Now usually we don't associate tanha with something like nirodh, or Dharsa pointed out, drew my attention to Anand's famous story, जो पहली संगीति हुई, जो पहली काउंसिल होने वाली थी after the passing away of the Buddha, उसमें महाकश्यप sets the condition कि केवल जो अरहंत हैं वही participate कर सकते हैं. And we know the story where Anand is really striving so hard to attain enlightenment, and it's only when he drops that striving, when he drops that tanha, so to say, that enlightenment comes about. So we can also see how the wrong attitude towards even something as wholesome as nirodh has the risk of getting one caught in tanha. So those are categories of tanha. Before we go on, any commentary on this? Darsab, anything that you'd like to say? These are also higher fetters. ये जो अभी हमने बात की आपने भंते जी, रूप तन्हा और अरूप तन्हा और निरोध तन्हा, तो ये हम इसको भव तन्हा में इसको कर सकते हैं ना कन्वर्ट, मतलब निरोध तन्हा जो है कि मुझे इस तरह की मन में एक इच्छा है कि मुझे सेसेशन ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा उस पे, तो क्या भव तन्हा कहेंगे इसको? इसका एक टेक्निकल क्लासिफिकेशन और भी है इसमें कि जो रूप तन्हा और अरूप तन्हा, अगर वहां पे हम तन्हा को सब्स्टिट्यूट करें राग से, रूप राग और अरूप राग, तो ये डिसअपियर ये ड्रॉप होते हैं हायर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर कि जो काम राग है दैट ड्रॉप्स एट अनागामी. So there is also that classification. So Dharsab, can you please add to this? Rag drops at the anagami, and these Rup Rag and Arup Rag drop only in Arhant. This is the one which drops in Arhant. कामराग तो हमारी स्पेशलिटी है ना, we specialize in कामतना. तो वो धीरे धीरे कम होगी, सोतापन में कुछ कम होगी, सद्दागामी में कुछ कम होगी, अनागामी में कंप्लीटली चली जाएगी. और रूप तन्हा और अरूप तन्हा आर टू सटल फॉर beings like us. So those people who experience deep jhanas, they have that kind of a
तो निरोध तन्हा को फिर कैसे, मतलब ये तन्हा कैसे होगी? जो बताया अभी बंदे जी ने। आई थिंक राजेंद्र जी, अगर हम जो हमारा कंसेप्शन है ना, इफ वी सी के इवन समथिंग दैट्स होलसम, पॉजिटिव, गुड, इफ इट्स ग्रास्प्ड, then it becomes unwholesome. I think if you see it that way, then it begins to make sense. And of course, there is a tremendous awareness has to be kept that when can the effort become a tanha, because after all, to have that, develop that nirodh के बारे में अच्छी तरह, सेसेशन के बारे में जानकारी हो, उसके बारे में कोशिश हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही है ना कि सेसेशन होनी है तो तभी तो बात बनेगी। तो इसके ऊपर कब वो, when does it turn into a tanha, it's something to be watched. और इस बात पे राजेंद्र जी बहुत डिस्कशन हमारे टीचर्स ने की है ना, कि छंद और तन्हा का जो डिस्टिंक्शन है वो इसीलिए तो शायद पाली में उपलब्ध है हमारे पास, और सूत्रों में कई बार ये चर्चा आती है। Thank you. Between, like we've discussed this many times, that your wholesome intentions to repair roads, etc., at some point turn around and they're very wholesome, but when they grasp you and inject the element of aversiveness, you can, in your experience you can see it actually very clearly. अपन कल ही आपके संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। जी जी। Extend it, it's actually quite clear. देखिए, ये रूप तना और अरूप तना के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? My suggestion is that we focus on काम तना. That's the one that's right in front of us. इसमें हमारी एक्सपर्टीज है ना, उसी को देखें। वो तो हमारे क्या कहना चाहिए, बियॉन्ड अवर रेंज एक्चुअली। They pertain to the jhanas, 4 jhanas and 8 jhanas, कि हमको रूप ब्रह्मलोक की आशा है कि वहां जाके जरा 1-2 ईयॉन्स तक रह लें, क्या रखा है, संसार तो बेकार है, दैट इज वंडरफुल। और रूप ब्रह्मलोक में तो 20-50 ईयॉन रह लेंगे, हमारा अगला जब बुद्धा आएगा ना तब हम नीचे उतरेंगे, तब तक तो वहीं रह लेते। So they are not within our experience really. So we know as a matter of doctrine कि इसका मतलब ये है। दरअसल साहब, इनका जिक्र सिर्फ बुद्धिस्ट टीचिंग्स में है या और भी रिलेटेड टीचिंग्स में है? और में नहीं है, बाकियों में नहीं। मैंने जितने पढ़े हैं उनमें नहीं है। जी, हो सकता हो मैंने जितने पढ़े हैं, जो इंडिक ट्रेडिशंस हैं, उपनिषद वगैरह, उसमें इस तरह की चीजें नहीं है। एक्चुअली जो वैकुंठ का कंसेप्ट है वो एक्चुअली called some kind of Rupa Brahmalok or something of that kind. Thank you. Another 3 cravings. But again, he's saying another 3 cravings for world of form and world of formless. So then here cessation. So difference क्या हो गया ऊपर वाले में नीचे वाले में? ऊपर वाले जो हैं वो है, that distinction is based on the realm of experience, और नीचे वाले में वो उसके we can visualize it in the sense of the higher fetters. So Rupa Tanha is Rupa Raga, Arupa Tanha is Arupa Raga, and Nirodha Tanha is the ultimate ignorance, Avidya. So they are the kind of higher fetters which prevent us from really breaking, ultimate breakthrough. ऐसा मुझे महसूस होता है। तो वो ऊपर वाले तो रेल्म के हिसाब से,
कामवचर लोका, रूपवचर लोका, अरूपवचर लोका, जिसे कामलोक, ब्रह्म, रूप ब्रह्म लोक या अरूप ब्रह्म लोक कहा जाता है. नीचे वाले जो हैं, they are from the point of view of tanhas which impede us from freedom, from liberation, from awakening. So that is a different category. Basically, these are different ways of categorizing, no? So we should always remember them in that sense. So there will be some overlap because they are categorizing the same experience in different ways. कृष्णा का एक अपना एक्सपीरियंस है, पर उसकी फाइनर सब डिविजन्स किए जा रहे हैं. कुछ किया जा रहा है कि किस लोक में आपकी तृष्णा है, कुछ किया जा रहा है कि वो जो सामान्य हम किया कहते हैं काम तना, भव तना, विभव तना, विच इज द सेकंड नोबल ट्रूथ स्पेसिफिकेशन. बट ऐसा मतलब नहीं कि ये डिफरेंट है, भव तना और ये सब डिफरेंट है और विभव तना. They will all be have, intersection. If you believe in the diagrammatically show them, they have intersection within them. आई थिंक वो जो इशू आया था कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो चीज़ों को वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डालने की है. एंड आई थिंक दैट्स परहैप्स पार्ट ऑफ द रीजन, एटलीस्ट आई रियली स्ट्रगल विथ इस तरीके का जो एक ओवरलैपिंग और फ्लूइड presentation होता है. So I think the way I see it also is it's also an opportunity for us to be able to see इस तरीके की जो हमारी subtle tendencies हैं. So and I notice कि ये consistently सूत्रों में आती है. Even something as central as dependent origination has actually multiple descriptions. और कुछ links किसी में नहीं है, कुछ links कहीं और हैं, and so forth. So I see it as मेरी opportunity to structure, reprogram how my mind has been conditioned. That's really how I see it. Basically, the scientific way of thinking है, उसमें single way of description होता है. Cause effect, cause effect, cause effect, इस तरह से चलता है. कोई effect है तो उसके कुछ गिने चुने cause होंगे बस. वो categorization भी वैसे ही की जाती है. Elements categorize किए गए तो unique है, एक particular categorization है. लेकिन उसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार किया जाता है उससे भी. पीरियोडिक टेबल के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किए जाते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये जो हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डबल बॉन्ड वाले हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हैं. सो द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट वेज बिकॉज इट हेल्प्स अस इन डीपर अंडरस्टैंडिंग. बिल्कुल वैसा ही है. और यहाँ तो अनुभव की बातें हो रही हैं. तो अनुभव किस कारण से हो रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से हो रहे हैं, तो वो हमारी जो रिजिडिटी है इन टर्म्स ऑफ सीकिंग फिक्स्ड आंसर्स टू क्वेश्चंस, वो हमको त्यागनी पड़ेगी. एक क्वेश्चन का फिक्स्ड आंसर परमानेंट फॉर ऑल टाइम्स, फॉर ऑल सिचुएशंस नहीं है. जैसे हम कहते हैं ना, मुझे एक साधना बता दो क्या करूँगा, या जैसे वो दलाई लामा का जो मुझे बार बार का याद आता है, डॉक्टर से किसी ने कहा मुझे एक दवाई दे दो यार जिससे मैं ठीक हो जाऊं, बार बार नहीं आना पड़े. ऐसा संभव नहीं है. This is actually a big kind of shaking up of our way of thinking. You know, that's the great beauty of such suttas, that they shake up our way of thinking. वो बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर हम उस तरह से सोचने की आदत डाल लें तो. और kind of fixity, rigidity, it opens up. जो unwholesome mental factors हैं उसमें ये सब आते हैं. Rigidity, non-malleable, जो wholesome mental factors उसमें specifically 6 या 8 ऐसे factors हैं जो कि which are related to only mudita and this ductility, malleability, ability to change, ability to adjust, ability to think in a different way,
These kind of things, qualities are called as essential qualities of a wholesome chitta. So that's it. So this is an exercise in developing that wholesome chitta, really. I'll just check up and maybe read out to you those. इनफैक्ट आपने धर साहब एक बार जिक्र ओवर सिंप्लीफिकेशन का भी किया था. आई डोंट नो वेयर यू फिट दैट इन, बिकॉज़ दिस बिजनेस ऑफ एक बता दो मुझे, आप इतना क्यों बताते रहते हो, इज मोर इन दैट realm, isn't it? That is the बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. देखिए जो ब्यूटीफुल यूनिवर्सल फैक्टर्स है ना, ब्यूटी मतलब इन अ होलसम चित्ता देयर आर 19 फैक्टर्स व्हिच विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, ओके, व्हिच इंक्लूड श्रद्धा, सति, हीरी, उत्तप्पा, अलोभा, अदोसा and equanimity or tatramadhyata. These are the seven. Now remaining 12 are just various ways of tranquility or changeness. Or then there are two tranquility of mental body, tranquility of consciousness. चलिए इनको बिठा दी तो 9 हो गए ये फैक्टर. बाकी 10 फैक्टर्स क्या हैं? Lightness of consciousness, malleability of mental body, malleability of consciousness, wieldiness of mental body, wieldiness of consciousness, proficiency of mental body, proficiency of consciousness, rectitude of mental body, rectitude of consciousness. So these are the qualities which are universal qualities of a wholesome chitta. तो हमारे चित्त जो है wholesome है ही नहीं according to avidhammic condition. Because we have rigidity of these views, we have rigidity of mental body, rigidity of consciousness. See? So this is the ये जो हम कर रहे हैं exercise अपनी समझने के लिए, this is the way by which you break that rigidity. कि भाई ऐसा नहीं है कि तना कितनी है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ऐसा नहीं है. वेदना कितनी है, तो कई जगह वेदना 3 बोलते हैं, कई जगह वो 18 बोलते हैं, कई जगह 108 बोलते हैं. ठीक है, एक बार बता दो भाई, तुम्हें क्लियर नहीं है क्या? बता दो ना कितनी है, परसेप्शन कितने हैं, तनाव कितनी है. अब वहां पे महासती पठान में 60 तनाज दी गई हैं. क्या हो रहा है ये सब? बुद्धा इज कंफ्यूज्ड. नो, ही इज टेलिंग अस टू ओपन अप, टू सी द थिंग्स इन वेरियस वेज, not see it in a particular limited fixed way. That's what it's called, looking at things from variety of directions, variety of manners. Ekanta darshan and anekanta darshan, ये बात की जाती है. This is a very common term in Jain philosophy also, anekanta darshan, looking at things from various perspectives. So that's what we are developing by these studies, really. सब not only नहीं है, आप जैसे बताते हो ऐसे लगता नहीं है कि होने भी वाला है, frankly. कोशिश तो कर ही रहे हैं हम लोग. Sorry. I couldn't resist it. It's 11:20 and the things you're saying are making us hold our head. Okay. Wholesome chitta definition है. I was really shocked. See, that's the point, that it's not wholesome clearly. और कोई आसार नहीं है दूर दूर तक ये सारे points cultivate होने का. वो तो कहता है ये तो यूनिवर्सल फैक्टर्स हैं, मतलब ये तो होंगे ही, अगर ये नहीं है तो सॉरी, यार इन अदर. तो उसकी अंग्रेजी नहीं समझ आ रही कि वो है क्या, वो फैक्टर तो बाद में आएगा, तो समझ तो आए. वो बेसिकली है कि माइंड इज नॉट रिजिड इन एनी वे, इट कैन चेंज, इट कैन अडैप्ट, इट इज विलिंग टू लुक एट थिंग्स इन डिफरेंट वेज, इट इज विल्डी, मींस इट इज एबल. अगर विल्डी माइंड है मतलब देन ओनली यू कैन यूज इट फॉर गुड एक्शंस. नहीं तो तुम रिजिड है, मैं तो ये करूंगा ही नहीं, मुझे मालूम है कि ये सेहत के लिए मेरे अच्छा है, मैं नहीं खाऊंगा. मत खाओ. क्या करें, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए लेकिन मैं तो करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. ओके, डू इट. दैट्स व्हाट इज मेंट बाय रिजिडिटी ऑफ माइंड, रिजिडिटी ऑफ consciousness. It's not willing to change at all, even though it knows it is wrong. There's many of these things would be intuitive also, and it may not be actually required to know all these details. Yeah. So basically, the whole idea should be that if you are, I mean, of course, malleability comes in here. If you are malleable enough by nature, then many of these things will be intuitive.
perhaps. You may not even know that you are doing these things. Yeah, but it's Yeah. always, and there's a very interesting aspect of wholesome chittas. If you do an wholesome action without knowing it, without knowing that it is wholesome, it is not supposed to be having all the true roots. So it is a lower quality of wholesome chitta. Now that is something interesting. That's what is. To know is also important. And Yes. Yeah. It's not only that you do right action, you should know that it is right. So the Abhidhamma makes life quite tough. So that is the real purpose of Abhidhamma for my understanding. बाकी सब उसकी इतनी सारी डिटेल्स उसमें जाने की जरूरत नहीं है. But these are really striking things, and you realize that yeah, they are right. So if a person does a wrong action, not knowing that it is wrong action, that is a certain quality. If a person does a wrong action, knowing that it is wrong action, there is a certain other quality. So the karma becomes more and more grave. Similarly, if a wholesome karma is done without knowing it is wholesome, it's good. But if it is done with this, knowing it's wholesome, it is better. That's the way. So because it is a question of all the three wholesome roots being present. You can see that, Alobha, Adosa, and Amoha. Amoha is not a universal mental factor. You can see universal factor in the wholesome consciousness. It has to be cultivated. तो ये बहुत भारी चीज है कि होलसम चित्त में लोभ नहीं होगा, दोष नहीं होगा, मतलब उसमें जेनरोसिटी होगी, मैत्री होगी, बट प्रज्ञा हो पूरी तरह से जरूरी नहीं है. That's something worth. I spent huge time in reflecting. क्या कह रहे हैं? दर्शक अगर इतना जरूरत होती तो इतने लोग अरहंत कैसे बन जाते बुद्ध के जमाने में? नहीं, obviously the issue is not that. Issue is whether our practice is really, if its practice is smooth and we are really able to break through, no problem, whatever. But if its practice is getting stuck, and we find, at least I found, that it was getting stuck, and in many dimensions tanha was not there. In some dimensions it was there, still there. Now that's a very funny thing. If I say Vedana Pachya Tanha, and I see only particular kind of Vedana, I feel there's no issue at all. I don't have any Vedana of that kind. But I know it is there. Intuitively, experientially, I know. So then we find out क्या हो रहा है भाई? Experience से तो लगता है कि हाँ है, लेकिन जो formulations हमने पढ़े हैं, जो broad level formulations पढ़े हैं, उसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए. So then we realize that there is something which needs to be investigated. For some, it doesn't. कईयों की पारमिया इतनी strong है that they just go through by single word. We have a classic example of Bahia. But there are people who are like us, like me, who need lot of work to be able to see कि कहाँ अटक रहे हैं. Right. When I interpret Asesa Viraga Nirodha in the manner in which I keep on saying, then I feel कि हाँ, शेष तो नहीं, अभी तो बहुत है, काफी शेष है. Yes, over to you, Bhante ji. तो अब जब मैं अगली कैटेगरी देखता हूं तो इस बात पे और दम लगता है कि जो तन्हा की रूप तन्हा निरोध तन्हा की बात हो रही है, it's probably got to do with fetters, because the next one is exactly that. संयोजन, जो 3 संयोजन stream entry के हैं, which we are familiar with, so will not stay there. फिर आसव,
फिर से आसवों का भी हमने कई बार चर्चा की है, कई बार डिस्कशन किया है, काम आसव, भव आसव और अविद्या आसव। ये जो भव की फॉर्मुलेशन है, कम से कम मेरे लिए ये फॉर्मुलेशन नहीं है। सो काम भव इज स्टिल विद इन एक्सपीरियंस, और जो इसके अलावा के हैं, they pertain to, as we can now see based on our discussions, the way the mind creates being, taking formation in formation is not quite the right word. I'm struggling to find the right word for it. But फिर से वही जो रूप लोक हैं, अरूप लोक हैं, it's probably also again connected with jhanas there. So so अगर हम उसको becoming की तरह समझें, you know, the becoming into realms, रूपा realms, and the becoming into arupa realms. Again, I would say from a practice point of view, perhaps not that important. पर जो काम भाव है, it's pretty clear कि sensuality की तरफ हमारी बार बार जो झुकाव है, and becoming as a step before jati. So that's how at least I understand it. Before I go on to the next one, Darsab, would you like to say anything with respect to bhav, or? Let's go to the next. Okay, so this is an interesting category. Asana in Pali is search, और हम लोग परिचित हैं आर्य परियसना सुत्त से, जिसमें it's almost a biographical account of, partly a biographical account of the Buddha, but also more importantly his the way he went about the process of enlightenment. So यहाँ पर we have the factors of again the search, interestingly, search for sensual pleasures, search for continued existence, bhavesna. And then the last one is super interesting. जो एक अजान को हम जानते हैं, अजान धर, उनकी ये उनका ये विचार है कि जो ब्रह्मचर्य स्ना है, this is the same as आर्य परियसना. So it's basically the search for spiritual life, search for the holy life. So in some senses, it's what we are engaged with. Many of us are engaged with. और एक और तरीका इसे समझने का ये है कि जो पहले दो हैं, कामेसना और भवेसना, they are like negative, they are pejorative in nature, whereas जो ब्रह्मचर्य esna, that is more ennobling. That's what takes us towards that search is what takes us towards enlightenment. So that's how I see it. Am I missing anything doctrinal here, Darshan? Enough. Okay, very good. Okay, then okay, Vidhas. ये जो next section है, we have italicized all of it, और this is the very typical way in which the asmi, the sense of me and myself comes about. Well, rather the sense of me, जो अस्मी मान की जो आखिरी fetter है, उसके जो constituents हैं, they are any of these. मैं किसी से बेहतर हूँ, मैं किसी से बराबर हूँ, या मैं किसी से I'm worse, I'm not good enough, and so on and so forth. So it's probably very helpful to see this here. Kai baar the framing in our mind is that it's always only in terms of a person classifying himself or herself as better. But here we can see कि ये जो मान जगाने के जरिए हैं वो actually broad हैं, और even considering myself equal or worse than somebody is a source of asmi. Asmiman. So I thought that's a super interesting. Or I think there is another sutta jisme this is described in more detail as far as I can remember, but it doesn't come to me immediately. The next category is pretty straightforward: past, present, and future in terms of periods. The next category
नॉट वेरी श्योर, इसका बहुत ढूंढा था, इसका कुछ हमें बहुत स्पष्ट मिला नहीं है, जिसको अंत कहा गया है, तयो अंता. So three फाइनली extreme. फाउंड इट बनते हैं. कल तो मिल नहीं पाया, आज मिल गया. So दरअसल जो सकायो अंतो है वो आपने बताया था. This is in terms of seeing essence in myself, in the body, so to say. So that's one extreme. How do you describe the other two extremes? Sakaya samudayo, origin, and sakaya nirodho. जी, एक्चुअली आई फाउंड ए सुत्ता. वो आज पता चला, तो कल नहीं ढूंढ पाए थे ना जब बैठे थे. तो देयर इज अ सुत्ता इन संयुक्त निकाय 22.103 where these were not just three, there are four antas are defined. Okay, and these are three are these, and fourth is the Sakkaya मतलब Nirodha. बहुत confusion, वैसे बहुत confusion है, आप तीन ही बता दो. नहीं, वो उससे और सिंप्लीफाई हो जाएगा. चौथा है Sakkaya Nirodha Gamini Patipada. So you can easily see what it is. It's actually reformulation of the Four Noble Truths. So the development of Sakkaya is the suffering. Sakkaya Samudaya is the cause of suffering. Sakkaya Nirodha is the cessation of suffering. And Sakkaya Nirodha Gamini Patipada is the way to end a cessation of suffering. So that made a good sense. So in that case, he has translated the Anta as three facets. So तीन facet के रूप में उसको identify किया. So it actually becomes another way of putting the Four Noble Truths. Rather than identifying Tanha as the source of suffering, is identifying identity. And identity is Panch Upadana Khanda. So it is actually a formulation where कहा जा रहा है कि प्रथम आर्य सत्य क्या है? पंच उपादान खंडा. द्वितीय आर्य सत्य क्या है? The origin of पंच उपादान खंडा. थर्ड क्या है? उसका सेसेशन. और फोर्थ क्या है? उसका मार्ग तो वही है, अष्टांगिक मार्ग. So that's another way of putting it, you know. So as I think a few times mentioned, I think to you and to others, I don't know, कि कई जगह formulation भगवान ने दुख की in terms of sense of self में की है. उस sense में वाले. So just to understand, इस framework में in and of itself हम दुख का जिक्र नहीं करते हैं, पर जो identity view है, that is the that becomes that becomes the dukkha, which is वो मतलब जो जनरल फर्स्ट धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में संखित्तेन पंच उपादान खंडा दुखा कहा ना, तो उसको पकड़ के यहाँ डाल दिया गया. एसेंस तो यही है ना, पंच उपादान खंडा. तो पंच उपादान खंडा मतलब 5 फोकसेस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे हमारे अंग्रेजी अजानों ने किया ट्रांसलेट. और 5 the way by which we identify ourselves, which is the Sakkaya Ditti. It becomes quite simple then. So जो सकायो अंतो लिखा है, this is to be understood as identity view in and of itself. So that's the first. The facet of Sakkaya. Yeah. The facet of Sakkaya Ditti, you can say that facet. This is the अंत को उस तरह extreme ना लेके facet की तरह translate करें तो फिर वो उस sense में ठीक हो जाता है. वो भिक्खु सुजातों ने उसको facet किया हुआ है, इन्होंने portions किया हुआ है बनते भिक्खु जी ने, भिक्खु बोधि जी ने. So once we see it in that sense, it becomes very clear. It is essentially Four Noble Truths reformulated in the terms of identity. And then Sakayo Samudayo doesn't bring reference to Tanha. Yeah, it means because the arising of this is, origin of this is the craving, which leads to new existence. Newer and newer Sakkaya. So if I can just read out quickly the sutta. What bhikkhus is the
portion of identity. So portion, I don't know what is translated as portion. It should be said 5 aggregates subject to clearing. Then which 5, we know all that. Then it says what because is the portion of origin of identity. It is this craving that leads to renewed existence. And we know all that. And what is the portion of cessation of identity? It is the remainderless fading away and cessation of that very craving. And what is because is the portion of the way leading to cessation of identity? It is the noble eightfold path and so on. That's how. So can we read Anta as personality, perhaps? No, Anta actually means the end. अंत हिंदी में अंत का मतलब अंत होना ना, पर्सनालिटी तो नहीं कर सकते, बट उसका 3 फैसेट या 4 फैसेट इस तरह, इसमें यहाँ पे 4 फैसेट की बात की गई, उस तरह से किया गया. So mainly वो जो detailed दुख का है, that is mainly what's curtailed. Yeah. And into its core. Yeah, दुख को उसके जो एसेंस है उससे जोड़ दिया गया है, बाकी छोड़ दिए गए, क्योंकि बाकी सब भी इसी के कारण ओरिजिन हो रहे हैं ना. संकेतेन पंचपादान खंडा को पकड़ लिया तो बताया कि उस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं. क्योंकि वही चर्चा हमने 3-4 दिन पहले की थी कि एक्चुअली जो सारे दुख की इतनी सारी डेफिनेशन है, इट रियली डज कल्मिनेट इन दैट, सो इट ऑलमोस्ट सीम्स टू बी so close to that discussion. That day also had mentioned there is a sutta, मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था कौन सा. This is one of them. It's there in many others also. This is one of them. So perhaps even हमारी प्रैक्टिस के नजरिए से या हमारे जीवन में धर्म को उतारने के नजरिए से again and again, if this is recollected and re-emphasized, that mainly it's an issue of identification, then you're really getting to the root of it. Then this is what our Longpur keeps on telling us, no? Sense of self, personality view, personality. But personality view also needs the eightfold path. That's it. Okay, so moving onwards, वेदना का जो फॉर्मुलेशन है pretty straightforward, हम लोग परिचित हैं इससे. अब हम आते हैं फिर से एक नया, एटलीस्ट अगेन मेरे लिए नया ये कंसेप्शन है दुखत्ता. और दुखत्ता एक्चुअली हमारे विनय में, भिक्षु विनय में भी देयर इज अ कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस, बट आई एम गेसिंग ये एक ही शब्द दो अलग मीनिंग्स हैं इसके. यहाँ पे जो दुखत्ता का जो यूज है, that is in terms of forms of suffering. So let's see how this is framed. पहला है दुख दुखत्ता, दूसरा actually sequentially होना चाहिए शायद विपरिणाम दुखत्ता, just in terms of logic, and I'll explain what that is. So जो दुख दुखत्ता है, जैसी समझ आई है, that is straightforward suffering arising from unpleasant feelings, basically suffering arising out of actual physical या mental pain. जो विपरिणाम दुखत्ता है, that is suffering, it's very interesting. It is suffering arising out of pleasant feelings. So जो changeful nature है pleasant feelings का, उस changeful nature के कारण जो दिक्कत होती है, जो suffering होती है, that is categorized under viparinam dukhatta. And the last one is perhaps the most interesting one, just in terms of feelings. Of course, that's neutral feelings. So it is defined as the suffering inherent in existence. So कुछ भी संस्कृत जो चीज होगी, उसमें जो suffering inherent है, that is basically संखार दुखत्ता. और उसका एक complementary part ये है कि only nirvana, which is beyond, which is visankar. Yeah, which is visankar, right? I was looking for that word. Thank you, Dharsa. Yeah, which is not constructed. Only that is beyond this kind of suffering. So I was wondering, ये सवाल धरसा मुझे बाद में आया. So ये जो conception है दुखों का, this is pretty widespread in the canon, is it?
Yeah, it is there. It is there. Yeah. The three categories of दुख का जो explanation detail किया जाता है कि भाई जो दुख जो तो obvious दुख है उसको कहा दुख दुखद था कि मतलब ये तो plain pain है प्रिय से वियोग है, you know, those kind of things are obvious दुख. So then there are, so the basic definition, the first noble truth is dukkha dukkhatta only. But when you go to the Sankiti and Panchupadan Khanda, then you move on to other directions. And then Viparinam is associated, as you said, with the fact of pleasant feelings also. Why do we call them dukkha? Because they change. They are not giving you abiding satisfaction. And Sankhara Dukkhata is the real most subtle form of suffering, because that even the best pleasant feeling is never equivalent to the visankhara sukha. So that's the way it is generally explained कि भाई कोई भी conditioned experience जो है वो उससे मैच कर ही नहीं सकता, तो उस सेंस में वो unsatisfactory है. So first noble truth की जो statement हम अगर उठाएं, so क्या हमें इस तरह से समझना चाहिए कि उसमें जो दुख की परिभाषा है अपने पास वो it is only comprehensive in terms of the last factor जो पंच उपादान खंड दुख वाला है, उससे पहले वाले जो हैं वो केवल इन तीन में से एक को पर्टेन करते हैं. They are the conventional ways in which dukkha is understood. That is the precise way which is based on deep insight. Panch Upadan Khanda is a result of insight. Those are the common things which you always say. दुख है यार, क्या करें, देखो उसकी डेथ हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बीमार हो गया. बीमारी का दुख तो है ही ना, मृत्यु का भी दुख है ही है. So those are obvious things. Yeah, well, with even the pleasant वाला actually अब मैं ध्यान से उसको फिर से देख रहा हूँ. I have the statement open. मैं फिर उसको ध्यान से देख रहा हूँ तो वो pleasant वाला भी उसमें actually captured है नहीं, isn't it? Description में पंच उपादान खंड को छोड़ दे तो pleasant वाला नहीं है उसमें. पर उसमें वो भी तो है ना कि प्रियों से बिछड़ना दुख है, प्रियों का साथ दुख है, उसमें in a way it is contained there. As I understand, Suren Prasad ji, the viparinam is actual, so to say, pleasantness experienced. So when I have coffee, it does feel pleasant. The problem starts after that. This is how I am understanding it. So अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो statement first noble truth की है, उसमें वो category भी specifically है नहीं. Of course, पंच उपादान में तो खैर सब कुछ आ जाता है. That's fine. But I'm just now realizing that the way it's defined is very much in terms of the first category, which is gross pain. So it's just something I'm noticing now. Okay. Okay, the next category, at least I have absolutely no idea how that is formulated, but I believe Ajahn Dhar has a theory about it, so I'll invite him to. Well, I couldn't locate it in the Tipitaka anywhere. We tried our best. आपको भी याद है, मैंने आज भी शायद कोशिश की कि आज की नहीं, मुझे भी नहीं याद. But it's not possible to locate it. So maybe someday I'll be able to locate it. So till that time I can only guess. Which is quite guess वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है ना कि भाई इविल है उसका एक फिक्स रिजल्ट होता है, गुड का भी फिक्स रिजल्ट होता है, और जो अनियत है जो कि एक फंक्शनल चित्त से जो अनंत काम करते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं होता. इट इज इनडिटर्मिनेट, देयर इज नो रिजल्ट ऑफ दैट. सो अनहोलसम कर्मा, होलसम कर्मा एंड द indeterminate karma.
there's this difference in the words, of course, there, where it is some other word is used, but that's how the best I can understand. और तो कुछ समझ नहीं आता. इसलिए इसको we can leave it for the time being. Maybe someday we'll be able to find a reference to it. उसका है reference, but it is in some Abhidhammic book जिसकी कोई translation नहीं है, और translation होगा भी तो उसमें अभिधम्म में तो explanation है ही नहीं. So it is really quite किसी commentary में होगा, देखना पड़ेगा. But I couldn't find. आज जो हम पढ़ रहे थे वो भी तो कुछ इसी तरह से था ना कि आप सोतापन बनेंगे because of these reasons, और मतलब जो फल आएगा somewhat related to this, can we say that? नहीं, सोतापन तो ये तो बड़ी simple चीज. Evil and fixed results. So there also they are talking about fixed results. Yeah. ये चीजें कर लेंगे तो फिर ये result आएगा. Yeah, of course. So there is a course choice, candidate course. If you break through, then fixed result is in 7 lives, at the most 7 lives, you will be liberated. Right. Result. Yeah. And if there's an evil with fixed result, if you kill a arahant, you'll have a long time in the Avici Naraka. That's a fixed result. Nothing can save you from that. So, and indeterminate is the about which there is no fixity. So it could be ordinary evil results, ordinary evil actions, whose consequences can change because of the seed not growing in the new form. That could be one way of seeking. But absolutely indeterminate are the functional chittas of the arahant, in which there is no result at all. उसके लिए शब्द इस्तेमाल दूसरा होता है normally, अनियत नहीं होता. So I'm not really sure what exactly that it means. It's anybody's guess. साहब कमेंट्री और गैस छोड़िए, आप एक्सपीरियंस कर दे तो हमें बता देना, बस बेसिक बात ये है. नहीं, वो तो गुड और फिक्स तो बात क्लियर ही है ना. पहले दो तो क्लियर ही है ना. तीसरे के अंदर डाउट है. तीसरे में यही लगता है कि 2 एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं. एक तो जो भगवान का कर्म सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन है, दैट इटसेल्फ शोज दैट थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड. नियत नहीं है, अनियत है, इन द सेंस दैट अगर हम ऑर्डिनरी होलसम अनहोलसम कर्म करते हैं तो उसका जो रिजल्ट का जब टाइम 45 होता है, अगर उस समय हमारा चित्त बहुत होलसम है तो उसका फ्रूट बहुत हल्का आएगा. देयर इज दैट लोना सुत्ता, नमक वाला जो एग्जांपल देते हैं भगवान. इसी तरह अगर हम होलसम चित्त, आज हमने होलसम कर्म किया और आपने उसको भविष्य में अपना चित्त बिल्कुल खराब कर दिया, नो, मूविंग फ्रॉम लाइट टू डार्कनेस, जो एग्जांपल भगवान देते रहते हैं. सो दैट्स द काइंड ऑफ अनियत चीज. अनियत इन द सेंस ऑफ नॉट फिक्स्ड. तो उसमें इंडिटरमिनेट शब्द यूज किया ना, इसको अगर नॉट फिक्स्ड कहें तो देन इट बिकम्स एविडेंट कि इट इज रेफरिंग टू दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो most probably that would be the explanation, because normally कर्म का fixed result नहीं होता है. It depends on the state of the mind at that moment also. तो उतना समझ में तो आता है, उससे आगे नहीं कह सकते. I can't be sure कि what the Lord meant or what is the meant by the Venerable Sariputta. वो सब रेफरेंस कहीं मिलेगा, किसी को भी मिल जाए तो बता दीजिएगा, हम भी देख लेंगे. You are welcome to search and find out. Okay, so what I propose is that we cover the next 2. उससे हम पेज के एंड में आ जाएंगे, at least the way it's for me, and then we can pick it up next time. Oh, your pagination is different. That's जी जी. Because we've got 10 minutes to go. Maybe rather than go forward, if there's anything anybody would like to say before we close. Okay, so if not, जी. If not, maybe just do this last one, or here we can do sharing of merits. So this is about the 3 tama, darknesses.
or it's quite interesting. Basically, this is that mind जो perpetually doubt में फंसा हुआ है. So one funny way that it can be described is doubt raised to the power infinity. Future के बारे में, पहले के बारे में, total indecision. And I think at different times we can ourselves see how this works in our minds, in our experience. But we also know people who are basically chronically doubting. So this seems to describe that sort of a thing. Iski statement English में ये है. One is doubtful, uncertain, undecided, and lacking confidence about the past, future, and present. Basically, कुछ खास बच नहीं गया. So I'm wondering, maybe we should not end on this note. Let me try and end on a slightly positive note. The next The one. next one is. Yeah, the next one is. Yeah, right. So, Tathagatasya arakheyani. 3 things that the realized one has no need to guard against. The realized one's behavior by way of body, speech, and mind is pure. He has no misconduct in these 3 ways that need to be hidden. Thinking, don't let others find this out about me. तो इस प्रकार की जो ये शुद्धि की बात हो रही है, it cuts across not just शील, but also it goes into the mental realm. कि मन में भी ऐसा कुछ उठता नहीं है जिसको कि मुझे हाइड करने की जरूरत पड़े. So I thought it's really extremely inspiring कि हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि मेरा जो वाची कर्म है वो ठीक रहे, मेरा बॉडी से ठीक रहे, but actually the mind doesn't formulate something akushal. So this seems to suggest कि even the जिस चीज को हम latent tendencies कहते हैं, they are basically completely wiped out. Because otherwise we say कि okay, something arises in the mind, I'm able to see it, and out of pragya I don't act upon it. Great. यहाँ उसके अलग उसके next level की बात हो रही है. And how I find this very inspiring is कि ये हमें दिखाता है कि हमें भी we want to reach there, जहाँ पे कि हमें बिल्कुल कोई भी चिंता ना हो. We have no worry about any sort of action, especially about mental action. कि माइंड अकुशल एक्शन फ्रेम करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, अकुशल विचार उसमें आ ही नहीं सकता है. So that for me at least is extremely inspiring. So maybe we can close there. Yeah, that's the statement I wrote for myself. We also have to reach where we don't have to worry about our actions of body, speech, and mind. Usually we limit ourselves to speech and body, but this takes us to the next level. Very good. So we can close, or next full moon we can go forward. Yahan se. So any last words from anyone before we do sharing of merits? I propose that before sharing of merits, I'll also like to do the short bhojang. Our integral member of our team, Deepti, is a little unwell. So with the bhojang, we... Sufficiently unwell. Darsab, I didn't want to be the one always saying, the wrong things and having my foot in my mouth. So thank you for doing that. So, chota bhojang karenge, with good wishes for Deepti, but also for anybody else that you know who is not well, physically, emotionally. The bhojang has great power. It even describes the Buddha himself as being unwell and being able to come out of that as a result of this. That's a chota wala.
भोजंगो सति संखातो धम्मानं विचयोथता वीर्यं पीति पස්සद्धि भोजंगा च तथा परे समादुपेक्ष भोजंगा सतत्ते शब्दस्सिना मुनिना सम्मद अखाता भाविता बहुलीकता संवतन्ति अभिन्याय निब्बाणाय च बोधिया एतेन सच्च वज्जेन शोधिते होतु सबदा एकस्मिन् समये नाथो मुग्गलानं च कस्सपं गिलाने दुःखिते दिस्वा भोजंगे सत्तदेशै ते च तङ्गभिन्नन्दित्वा रोगामुच्छिंसु तङ्खणे एतेन सच्च वज्जेन शोधिते होतु सबदा एकदा धम्मराजापि गिलान्येनाभिपीडितो चुन्दथेरेण तन्येवाभनापेत्वान् सादरं सम्मोदित्वा च आबाधा तंहावुत्थासि ठाणसो एतेन सच्च वज्जेन शोधिते होतु सबदा वहीना ते च आबाधा तिन्नानं महेशिनं मग्गाहता किलेसा वापत्तानुपत्ति धम्मतं एतेन सच्च वज्जेन शोधिते होतु सबदा। पुण्य समर्पण एवं शुभ संकल्प। अन्नमयं उद्दिश्य न दिट्ठान गाथायो बनामसे ईमिना पुण्यकम्मेन उपज्जया गुणोत्तरा आचार्योपकारा च माता पिता च ज्ञातका सूर्यो चंद्रमा राजा गुणवंता नरापि च ब्रह्ममारा च इंद्रा च लोकपाला च देवता मेरे इन पुण्यों से मेरे गुणवान उपाध्याय मेरे उपकारी आचार्य माता पिता एवं संबंधी सूर्य चंद्रमा राजा तथा गुणवान नर ब्रह्म मार इंद्र यम तथा लोकपाल देवता यमो मित्ता मनुस्सा च मज्जता वेदिकापि च सब्बे सत्ता सुखी होन्तु पुण्यानि पकतानि में। सभी मनुष्य चाहे मित्र हों तथस्थ अथवा वैरी हों मेरे किए गए पुण्यों से सभी प्राणी सुखी हों। सुखंच त्रिविधं दिन्तु क्षिप्पं पापेथ वो मतं इमिना पुण्यकम्मेन इमिना उद्दिश्येन च वे इन्हें त्रिविध सुख दें और वे शीघ्र अमृत पद को प्राप्त करें इन पुण्य कर्मों से एवं इस समर्पण से। क्षिप्पाहं सुलभे चैव तन्हा उपादान छेदनं ये संताने हीना धम्मा याव निब्बान तो ममं न सन्तु सबदा येव तत् यत्थ जातो भवे भवे तृष्णा एवं आसक्ति का शीघ्र भेदन सुलभ हो। जब तक मुझे निर्वाण का साक्षात्कार हो जहाँ भी जन्म हो मन की अहितकर वृत्तियों का सर्वदा नाश हो। जो चित्तं सति पन्यासल्लेखो विधियं हिना मारा लभन्तु नौका संकत्युञ्च विरियेषु मे।
मेरा सीधा चित्त, सती प्रज्ञा, तप एवं पुरुषार्थ से युक्त हो। मार्ग को मेरा पुरुषार्थ कमजोर करने का कोई अवसर न मिले। बुद्धाधिपवरो नाथो धम्मो नाथो वरुत्तमो, नाथो पच्चेक बुद्धो च संघो नाथोत्तरो ममं। तेसोत्तमानुभावेन मारोपो संलभन्तु माम्। बुद्ध मेरे उत्तम नाथ हैं, धम्म मेरा श्रेष्ठ उत्तम नाथ है, प्रत्येक बुद्ध मेरे नाथ हैं, तथा संघ मेरा श्रेष्ठ नाथ है। इन सब के उत्तम प्रभाव से मार की शक्तियों को कोई अवसर न मिले। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा, बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि। Join in paying respects to Bhante ji. Pranam. Dvitiyampi. Tatiyampi. Thank you very much. Thank you all for staying put till midnight. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you, Thank you, sir.